તે લગભગ ઈ સેશન લાઈવ आहे અને અગર લાઈવ जी लिंक माझ्या टेक्निकल टीम में जन कोई शेयर करी सके चैट बॉक्स में तो प्लीज करी जा प्रोत्साहन 1 जी यूट्यूब लिंक तमड़े के ध्यान में છે नाउ दैट वाज इवेंट 1 जो को भी नए नए प्लीज ने रही बहुत सरस कंटेंट है हेर चांदनी बेन जस्ट चैट टेकरी व्हाट्सएप जी लिंक हलाए ना ही ग्रुप 2 जी लिंक है पांचो प्रोत्साहन जो ग्रुप 1 में 256 मेंबर ऑलरेडी आई so this is group 2 so those who want to join please join here मड़े के रिक्वेस्ट है कि ही जो को वेबिनार है से पूरो एंड टू एंड एरी आज संडे है मस्त सांज जो टाइम है અને પાકે લર્નિંગ કરે જો है इनमें पांचो नॉलेज डबल थे वारो जो है 3 टाइम्स थे वारो है तो नक्की जाए એટલે मड़े के रिक्वेस्ट है कि एंड સુધી રહે विच में इन ड्रॉप आउट નથી जा तो कि हिंजो जो को भी एंड टू एंड पाके अंडरस्टैंडिंग मिलनो बहुत जरूरी है so with that this is the session 2 I welcome our speakers અભિષેક અને ચાંદની અહીં વિડિયો ઓન કરી જા જો ક્વિક ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ડેડિયા અને સેશન 2 જે રિલેટેડ અમારે કે ઇન્ફોર્મેશન ડેડિયા અને કોઈ પણ સેશન શરૂ કર્યું so request Abhishek and Chandni to turn on your camera and come on screen so session 2 it is purely being focused on interviews इंटरव्यू कई रीते करे कोई पण जगह ते पा जॉब अप्लाई करी अथवा तो केते पण बिजनेस में पण हूं राइट केते भी कोई भी चाहे जो इंटरव्यू मतलब एकड़ो कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टीज जॉब सीकर एंड जॉब गिवर श्रेया के रिक्वेस्ट है म्यूट करी जा सो कन्वर्सेशन है को-होस्ट के रिक्वेस्ट है थैंक यू ये जो को कन्वर्सेशन है इनके पास हो तो इंटरव्यू जो मतलब करो कि जो को कंपनी है जिन वटे ओपनिंग्स हैं इन्हीं के कैंडिडेट्स के पूछना है कि भाई आपका क्या खूबी है पूरा करी सको टेक्निकल क्या है क्या नहीं है पर्सनालिटी वाइज आप कैसे हो इंटरव्यू में एकदम स्मार्ट हो ने मोह चढ़ाયેલો હોય ને અહીં આજે અડી તો ઇન્ટરવ્યુ વિડિયો તો સામે વાળે કે મજા ના છે so this is all about a beautiful conversation between two people તો ही जो को कन्वर्सेशन केन प्रमाणे थीनु खपे ना इन जो कुछ हो जाए टिप्स અને ट्रिक्स ये जो को ऐसे आज पाके जानेला मिल दो so I request Chandni to start over and as you both have done the presentation so you may switch so Chandni Mengar she is available with us and Abhishek Bhai Hurbuda they are the main speaker for this event over to you Chandni. Thank you Kailash Bhai. It's heartwarming and very great to see people had joined event right before the time when we are having our testing period zero time there and it's a very great feeling when the kids of our community are very much taking interest in everything and jo ko pange response malewa and kare madike thank you so much and thank you for joining at this time this Sunday evening with us it would be very fruitful and very much will make this session very much energetic and keep it engaging all the time and do keep it us till till the end so yeah and to briefly introduce myself here mujhe naam Chandni Mengar hai I am a qualified CS and a lawyer I've been working since now more than 8 years and it's been a very great journey jada muke bhi yada mare questions achhi na mujhe interviews mein kadi dete wana mujhe CV kaise upload kara to jo first CV jo ye session hai jo last session hai that helped you the way I was looking for so jate muke questions or interviews la kare I hope this session helps you because you are such an experienced we are helping you people and we are sure it will be adding a lot to your profile. So yes, currently I'm working with a German-based legal firm and it's Roder and Partners and even doing my freelancing work. And to say whatever I'll be sharing over here, it would nothing be related to what I'm working at, but only the initial interviews which I have given in the every organization where I wanted to get myself engaged. So yes, this is from my side, and I'll now ask Abhishek to introduce himself. Thank you, Kailash bhai, and thank you, Chandni, for the brief introduction. So, hi everyone. First of all, thank you very much because मेरे को जो भी CVs submit हुए, I can actually sense the change
because CVs सच में बहुत अच्छे डिजाइन किए गए. You have actually taken into consideration whatever we discussed in the first webinar, right? So again, like clapping for you guys, because phenomenal work on CV. And that's what like I'm expecting you to turn around in terms of interview, and that's why we are having this session again, focusing just on the interview. और इसीलिए हम लोगों ने दो parts में इसको divide किया. First, we wanted to make sure that you are presenting yourself on paper in a very presentable way. Now we'll make sure that whenever you are facing that, right, matlab, whenever you are going into the market, whenever you are facing the real challenges, you are ready for that also. So again, like thank you very much. And I would again like to request everyone that अगर आपका कोई भी दोस्त है जो अभी join नहीं हुआ है या is facing some sort of an issue, please ask them to join, because we'll shortly start. और starting से ही it's gonna be a very pumped up session. So very first slide se we'll start with tricks, techniques and everything. So I'd request that pura ye, and we'll try to wind it up within 1.5 hours, taking into consideration the time we have. But whatever time we have, I would request that you can actually ping your colleagues and or your friends and can ask them to join as soon as possible, because we'll be starting in like next 5 to 10 minutes. Looking forward to an interacting session, and I'll see you few of them in one-on-one interview. Yeah, thank you. Over to you, Kailash. Okay, I think with that we are ready. Abhishek, you can share the presentation and request everybody to note down their questions, and we have a lot of great pointers. So yeah, please start. Yeah, I'll quickly share my screen. Just let me know once the screen is visible. It is, right? Mm-hmm. Yep. So Chandni, if you may take this out. Yes, thank you, Abhishek. So this is the agenda for us today. First, just the introduction to OEF, so like what we do exactly with the OEF and what are the goals for what are the goals and what we will be doing in future. Second, Protsahan introduction. GM Panya Kailash Bhai can introduce what's the Protsahan about and what's the motive behind. Yes, we have covered that. Now we go to the introduction to crack the interview. Okay. And what we will be basically looking into, what are the areas. So Khali, to be like a little bit in gist, I'll explain there how we are going about this. This entire session would be divided into 3 parts. Okay, interview जे पहले करो पंगे तैयारी करे जी है. During the interview जड़े जो तैयारी થઈ गई है, how we will be presenting ourselves, whether it's on a telephone, whether it's on a Zoom call meeting, or whether it's in person, right? So, being a COVID and somewhere, I wouldn't say we are thankful, but then the interviews are like started happening over the Zoom calls and everything. So that's the area also we have covered. And then the post interview, like panjo interview થઈ ગયો ને પાંકે follow ups ને પાંકે કરે જાય, but then how you will be closing the deal, like ઘણા વખત પાંકે job ગમાઈ હોય તો how you will negotiate about it. So that part we will be covering. So right, so we'll be starting how we'll be doing our preparations for the pre-interview. I'll ask, request Abhishek to just. Anjay Putia Panjo, we'll have the summary and a question answer round. Jada, like once we have finished, in between, agar anke questions do keep posted in comment box. May just type it over there, and we'll take it at the end of the session. If possible, like we'll cover all the questions, but we'll look forward to that we cover everything there, and then we'll be having a concluding speech. So e-brochure also we say a template. I think so. In area Juna, this has been shared, and this is the area which we look up to. Okay, jada interview the first
few questions in our mind, like top of the head, ek aur karu jo kiya kari hosi, and that's the thing. So introduction to cracking the interview. What will you learn in this seminar? Like the motive behind ke 5 course set course hi adati, or like what will be adding into already what we know. So how to dress for the interviews. Second, what to say during the telephonic interviews. ઘણા વખત હોય કે કોઈ આંકે call કે and like you are like I'm middle of something, તો ચેજો કે ન ચેજો કારણ કે call ખણી ગને જો કે like we can ask them કે hum will get back to you in 2 minutes, or like I'm out or something. How you can tackle that. Then what questions to ask the interviewers. Questions pochhava je na pochhava je. Generally some people might say any questions in interview ke na pocho question, otherwise you will be like only kahin lagdo ke aage ki khabar na. So getting the answers to that is also what we'll be looking in the coming slides. How to be focused and maintain positive body language, which is a very important thing. Like it shows, it's a very first impression which you make it on the interviewer. Like even when you're on a Zoom call, or like you're going for the in-person interview, it makes a great effect there. And it speaks a lot. Like generally we say action speaks a lot than what you mean to say, but it is one kind of action, right? Like how you need to be prepped, and like how you need to be like be in the interview. So yes, these are the few points, and TV vadare we have the points to cover, but just to give a gist, like what we'll be taking after this event with us. Moving ahead. So these are the ground rules. Change because we all are interested, but I would still take you through it. And jetla bhi phones ke like you are having any other gadgets around, just put it on silent so you can concentrate. And whatever questions, whatever queries you have, as we said earlier, Kailash bhai said, even Abhishek said, like you can just put it down in the comment box and we'll take it up. And the last point is we all are wise and happy, so just listen attentively. Yes, so moving on to next slide. And here we start with the facts. What are the breathtaking facts about the interviews, right? Very first point, I would take it the average selection ratio. So ratio. So you must have seen, right? The openings do come and you apply. I mean, my friends apply, there is an opening there. Sometimes you feel there is a person selected and you're like, I went with the same preparation and everything. What didn't work around? So this is the ratio, like it's as per the general available information publicly. The ratio is out of 12 people, 1 person is selected. So agar I samjho ke around ekdi opening hai jada, there's a opening maybe both mass basis pe na hai, but still they are looking around for that one position. They'll interview around 12 to 15 candidates and only they'll pick it up. So this is the thing. So you need to be prepped, right? Like you can't just go and you can't assume I'll be the only one. There would be other people and you need to stand out. So that's one point. Average round of interviews are generally 2. So agar if you have experience and we notice kya hunda ke pehlo anjo basic round, right? Like where you have a HR round and then you have a technical round, and then if you have a managerial round. But it depends from every company to company, and even certain department the structure key and even the level at which you are applying. So it all depends. The areas varies, but generally they like to finalize out like in the 2 stages. And your first would be HR round, and then you can just go with the managerial round where you will have your seniors on that panel. Yeah. जड़े पांच होने था कि 12 में कोई हकड़ो जाने के लोग select करेगा. There is even a other way around, right? Where 1 out of 5 of the selected candidates do not join. There would be reasons. You get some other better opportunities somewhere. There would be a reason that you have
some other requirements, like you have applied, you know everything now, but then it something is not working out for you. Answer to be added, there is a it generally muddy here. So just to say around that, if you have applied somewhere, wait, have patience. They'll get back to you on that front. Like, अंके खबर पे कि friend apply किया ना वो select થઈ गयो, but there is a possibility that someone who was selected, he must have or she must have rejected that offer. So just be hopeful and you will get a good chance and you'll get a good job. So be prepped with that positive attitude and it will work around. Definitely, I'm telling with my experience, it will definitely work. Yeah. So now we'll be, can you move on to the next slide? Should I like need to say anything over here? But only the fact, tell the stories, don't lie. And you can say stories in your own way. Like when I say stories, it's a questions when they ask about you, right? Like what work you have done and what contribution or what value addition you have done to any organization, and how it impacted the entire team, and how it even helped you to grow in that area. So make a stories, and like you can't be adding anything to it, but a relevant thing which is they are looking for. So always look with the perspective of what the interview has come up on board, and not just your perspective. So always stories, and yes, we believe you that you don't lie in the interviews, because I don't. Yeah. So moving on there. Now we move on to the core area, that is pre-interview, and that is the prep overview. So prep overview में पंगे core करे जो है, and which are the areas which we need to look into. And interview डनेला करे, we know कि पंगे interview जो JD जे हिसाबे or whatever the requirement and whatever the qualification you have, पंगे कोरो भणी ने बने जो है, we know it, but then there are other aspects and other areas which we even need to look into, right? So we have the areas over here, which is like job role knowledge, interviewers profile we should know, research company information, right? Company information is very much necessary, and story building. But Hada, like as we see, like the most important thing is to research about the company. आगे company की information होनी बहुत जरूरी है. I'll take each and every area and we'll look into it in a little bit detail there. Yeah. So these 4 important things which we need to always keep in mind. Whether if you are a fresher or you are applying again, like after having certain years of experience. So job role knowledge. You should really know what you are actually applying to and what you are expected there. You just can't be कि आऊँ ही हड़ा ही organization में आऊँ ही क्यों या तो आऊँ ही मुझे यहाँ सोयो है कि हेडी रीते हुए. It doesn't work in that area. So you need to really know, and how you would know. आंसर तो जो कोई job description share करे लो है तो you need to look into those pointers and check कि this is the area and how it would be delivered. अगर इन कोई चाहिए कि tally software है, you know tally, right? But then how that tally software would be used. For example, if you're going for any audit role, right? So tally software you will be auditing. So in purpose you will be also out an expectation to tally work here for it. How the entries are being put there, how entries are put in SAP, and in the way you would be looking out. At the he entry, LHS is equal to RHS. That doesn't work. So you need to know that job role and like can you level to deliver if you have people under you, how you will be working out and what you are expected to do that. That is one point. Second thing is interview profile. It's really important to know whom are you going to have your interview with. And in today's era we have such kind of tools like where you can just go and check
And even I would say I have done this even in your first round where you just get a general call from any of the HRs, like they ask you what is the proper time or convenient time where we can conduct your interview. You can ask them as well. Anke, Abhishek bhai, and I will also take you through that in the coming up slides. But to know the profile, where you can go to LinkedIn website, they know about their profile, what are they into, and who is the person. Are you going to interview with a lady or a man? So accordingly you will be addressing them. We expect, right, certain times Chandni is a girl, and so you can address a man, but then certain time it becomes, right, there would be a man on the other side, but the name would be different or on the similar lines. So, and even the expectation from that person. अगर any managerial person સાથે interview करला करे बनाता, right? So you should be knowing what they expect from you and the experience which they hold. So other than ABCD of that particular role, you should know it till Z. That is how would I put a metaphor there. But knowing your interview's profile is very much important. Research company information is there. I would take you through the slides. We have it in detail slide over there. I'll take you through that. But that is also a very important area. And story building is something about jada anke anje bare mein and how you will prep yourself, right? Something which we know and we always listen to and we hear around. Confidence is the key. To confidence, carry rite, follow karine achindo. That will go through it in the next slides. Moving on to next slide. That is all about preparation, right? Prepare A, it increases your confidence. As I said, confidence is a key. You enter any room, but then how you get the confidence is also other area. But you should be confident enough, to answer the questions, and you should know. So that was the earlier slide. Core steps karna khabla. So at least basic information you know about an individual or an organization, you will be somewhere knowing it, like what you're expected and where are you going to. When you know about a certain company, you will be team के company साथे काम करना है. But what area you have already done your research, so you are confident even more कि मुकेश को इन area में काम करना है कि मुकेश जिन kind of a company or kind of a work profile or even in the kind of a ambience, right, or maybe a culture you want to work around, that is all which helps, and it gets a confidence in you. It works, and it's so that's why we say like prep in this area, and at least you're at the basic level you're confident to answer. Moving on to the next point is improves your prep skills 5% everywhere. This is the third point. I'll go to the second point. I missed out on that. Sorry for that. Improves your comfort. When you know many of the questions you might ask and understand how to answer them, it relieves stress and increases your comfort level. Which is true. Prep you will be at ease, right? I would say example कि अगर ही slide के बारे में अगर मुझे ना खबर हुई, I would be right now panicking. I would say rather than being nervous, I would have been panicking, and I would have been, and that shows, when I say your body language speaks a lot. It harms very much on the side of an interviewer because they expect certain basic knowledge you have when you enter that room, when you even are on a call, because your voice also denotes many things, right? So that is the second point. The third reason is it improves your prep skills 5% every time. So here it's taking something positive from every interview you do, right? I select there would be many reasons. They didn't have that many vacancies, or you were not fitting into the role, or sometimes it even happens that they have some budget issues. There would be reasons, but
Palagare positive Kora, right? Every time we are going to different interviews, we always, when you prepare, right? When you prepare, you always gain some knowledge and it helps you to increase your confidence there. And incremental hai na, that is only for us. So somewhere it's a very positive point which we can take always from the interviews which we give. And fourth reason is it's this preparations now we gains constructive feedback. So keep pandla kare feedback. As I said, like, it improves prep skills, right? 5% every time. It adds, but at the other hand, right? Kola se like not yeah, you always have an evaluation for yourself. Sometimes like I might fumble. कोई question पूछे चाहे what are we going doing? Maybe कदाच मुझे ये job period में कोई gap achieve हो. There is I might fumble, but then that question I didn't expect. Second time when I know now like this kind of a question will come, you prep for that and you are ready. So that is how you can get a constructive feedback for yourself and you overcome your weakness. So it becomes a strength and which is very much important again. Moving on to next slide. As we said, right, the preparations area which we need to look into, job role knowledge sources. So read the JD thoroughly. Already हम चीज़ें बारे में एक बात कही है, but then we are still taking it ahead. Read JD thoroughly is second time I would say. And if you're not clear about it, ask HR. And if HRs won't know, they'll actually ask that. Even if you go to the technical round, right, the technical person would help you. I would say it helped. It happened with me. I was not sure about the kind of JD I was applying for, and somewhere it looked like this kind of work I have done before. And I asked HR, and this is a very renowned organization, I would say, and it's a MNC, it's globally there, and it comes in a very in top 50s. And I asked HR, even she didn't have answer to it, and she was like, "I'll make sure that when you go at the technical round, the person who will be interviewing you would make you understand what profile exactly are you applying." And Mandana, that person actually मुझे पूरा समझाना कि पूरा profile है ना, what exactly are we looking for the output. But I wouldn't ask on stage to the one. You can ask to the HRs for sure and read thoroughly. I mean, JD is watching that, and they are simple. Most of the time, they are simple and they are not that complicated. So yes, talk to someone in similar profile in the same company. You can do this through many ways now. LinkedIn is the best source. You will, we even ask for referrals. So definitely we know someone over there. You have friends working in that organization. You can even ask them. So when you say ask them, they are from the same kind of verticals, and they know about that role, right? So which helps you understand like what exactly and how exactly you will be executing what you are expected to. Third thing is rebuild the base. Read articles and blogs to understand the latest trend with the same goal. Theory remains same, sorry, but practicality changes. So you should know about it. And there are many organizations who even have started posting the articles. There would be something new happening. Their employees would write an article on that. You can check those and even go through many websites. Yeah. So moving on to next one. Excuse Abhishek, you want to take over? Abhishek? Yeah, hello. Sorry, I was on mute.
Chandni, you are on mute. I'm sorry for that. So we start again. Interviewer's profile we spoke about, right? So be a spy. Look at their profile and see their career progression. And this LinkedIn is the best source where you can just see on the left hand side of the profile, right? Like how they actually started with their career and the way they have increased and way they have grown, the way they have changed their organizations, what are the skills they have, and it's a best platform to know the interviewer whom are going to basically I would say face. So look at to their skills and always send a connect request before the interview. It makes an impression that person is interested, but don't get too much into it. Don't like send message. I like the interview is scheduled with you. I'm very much pleased or something. That doesn't work in your favor. So just send a plain request, and it would be good to go. Moving on. So research is already we spoke about. So which are the areas like where you can find company information? LinkedIn. So this is the new initiative and very key innovation. I would say जितनी भी companies हैं and ये business development plans हैं, they are actually working. LinkedIn, they are taking considering this social platforms where they can actually let people know more about their company. So you can check for company's profile on LinkedIn. You can check industry magazines, how they are positioned against their competitors. So sometimes there would be, for example, the organizations like Tata and Force Motors. So they work on the similar ground, but then you are going for a Tata, right? How they are compared? What is the area like? What gets a difference over there? You should be knowing. Maybe in some companies, like apart from this Tata and Force Motors, you even check some kind of similar companies where you might find the work culture which you want to work into. In the work area, the profile kind of which is more suitable in any of these organizations. So it helps you there. Company website, it's a core thing. Always look into the about page and you will find the information there. The about nowadays like companies have started working on the website very well and they have made it very user friendly. So look into that area. Friend and a former colleague, it's a brownie point. अगर कोई पंहिंजो दोस्त आहे के कोई पंहिंजो फॉर्मर कलीग अगर उन ऑर्गेनाइजेशन में हो न तो दे कैन गिव द बेस्ट इंफॉर्मेशन दे हैव અને અગર હું ઓન ટીમ में हो जड़ा अप्लाई करो था तो दैट वुड बी द चेरी ऑन द केक राइट एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स अ लॉट અને ઇમ્તિયાન આંગે ઓની જે કંપની બારે में જાણેલા મળલો like how they work, how you are expected to work and whether that work culture is suitable to you. Sometimes you might be introvert or extrovert. It does make changes. It does affect. And to know that I'm here research करनी अपनी company के बारे में. And these are the best areas where you can look into. Moving to the next slide. This is where we have to work on ourselves, right? Every time you go for the interview, how you will be unwinding the hero within you, right? You have to introduce like how the hero is born, what you'll think. I mean, you have to just speak about you, like hi, my name is Chandni Manushali, or Chandni Mengal, whatever the name you use it across, and nothing more than that. Right? What you are being expected to say something in crisp. You can't just tell about
If they ask you what does your father do, then yes, go ahead and speak about it. But don't be like pehle se, "Arey, my father is into this and that." No, always keep it crisp and speak to yourself about it. Why job switch and why this company? Ask yourself what you want to do. Why you're switching? Is it just because बोवर एक है या ने हाणे चेंज करनो है, or is it something मुझे मुझे skills आना વધારना है. ही कंपनी खोला ने ही कंपनी खोला. There would be a thing. There would be a small companies. There would be a big companies. So work also differs, right? Futuristic approach. Sorry. What are your long-term plans and what are your short-term plans? So it goes hand in hand. Why job switch and why this company? They both are very much interlinked. So always think about that. Failure lessons. Everyone fails in life. That is when we said, right? Like जड़े interview डलना करे बनो था. When fail सेवा घड़े ऊपर एक fail भी थियो ने. Sometimes like you get it, at your very first chance, right? At very first luck, you get what you are looking for. And what you have learned, that you have to do everything for yourself. You have to do your story building and present it. Yeah. Moving on to next slide. So preparation kari gaya. Now it's interview time, right? The D day. Now we so called it. It's a word, right? Like the day. So here all we have is to say is be nervous but don't panic. Right? When you say nervousness is good when it gets the best out of you. But panicking is like actually preparation kya hunda na? That will also not work. So jetlo pachai na jetlo kyo karayo hundo na, everything will be like washed off. So that is the one key takeaway for the day for sure. So yes. Move on to next slide. I won't take much on this slide because everything जो को भी इनके बारे में in detail है that Abhishek would be taking care and he'll be taking you through the other slides. But what are the Uncle Hitloch on this? What are the type of interviews that even today like we have Zoom interviews in place and even for the initial round, when you look first round where HR round and maybe technical round, you have to go through this modes. So in-person interview, you have Zoom interviews and you have telephonic interviews. Telephonic interviews where you'll have two ways. One is initial calling, just when a HR or a consultant might call you after looking at your CV on the Naukri or on a LinkedIn or in their inbox. They'll just call you to ask like whether when would be the good time when we can arrange an interview for you. That would be one way, and second would be a proper telephonic interview where they'll ask the basic questions to you. That is one, and then you have a Zoom interviews where you go for your even for the first primary round, and then for your technicals and final rounds. In-person interview, as we know, it's a old school form. Jade, like we be in a formals and we go for the interview. So these are the interviews and this in detail, like how to go about it, what to do it in this kind of interviews that Abhishek would be taking care and he'll be running you through those pointers. So now I ask Abhishek to take it from here. Yeah. Thank you. Thank you, Shanvi. So, hello everyone. So, moving, I hope the insight which we gave, right? So, the time which we invested on the because the reason why we are starting main interview wala part that late in the seminar because prep ka utna hi zyada important hai. So prep holds a very large chunk of importance during interview. Whatever you do it, interviews to आधे घंटे का होता है, 45 minutes का होता है. But that would actually reflect your entire life and your entire efforts which you have put in, right? And how well structured thought which you are able to do. So इसलिए हमने prep में time लगाया ज़्यादा to make you sure that you consider all the parameters which we listed, right, in a detailed way. उसमें क्या research करना है, कैसे करना है, we'll be talking in much more details while handling how to handle the interviews, right?
So moving on the first type of interview, which is telephonic interview. Generally ये पहला राउंड होगा इंटरव्यू का, एंड यहाँ पे दो चीज हो सकती है. वन, इट कैन बी अ शेड्यूल्ड टेलीफोनिक इंटरव्यू, जब आपको मेल आता है समझ लो, एंड द एचआर टेल्स दैट ओके आई विल बी गिविंग यू अ कॉल एट अराउंड 1 p.m. विल इट वर्क? यू विल से ओके. So that is actually a scheduled call which you get it right. But sometimes whenever you are uploading your profile, maybe on Naukri or LinkedIn, you are applying, right, आपको directly भी call आएगा HR का, and that will be like a very first call to you, very primary basic call, जहाँ पे they will ask you about hey, are you interested for the job, or are you looking for a job change, or you have recently applied for this job, are you looking for any sort of a switch? तो वो वाला part हम अभी cover करेंगे, the first call, which is random call when you get it. Okay, so number one thing you have to consider is act normal, don't get excited. आपका voice would play a critical role here, so be normal, just sort of think that it's just a call from a colleague, and just try to be normal, don't get very excited or pumped up, right? The second is listen carefully and always make notes. So कई बार वो details देंगे आपको location के बारे में, job details के बारे में, you have to listen very carefully and always you have to make notes, right, whatever they are saying. The third and the most important part is always ask about more details of the role whenever like you get first sort of thing, right? अभी आपने कभी भी apply किया होगा, right? So you might not be remembering exactly that उसका JD क्या था जब आपने अप्लाई किया था, बिकॉज ऐसा होगा आपने 20 दिन पहले किया होगा, या यू माइट हैव अप्लाइड इट 15-20 days earlier, राइट? तो वो पॉइंट इन टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू आस्क देम. अगर वो कहते हैं कि हाँ आपने अप्लाई किया था, यू कैन ऑलवेज बी लाइक या आई हैव अप्लाइड बट like it's been quite a while, can you please throw some light on the JD, like what is the role? If you have any sort of a query, please ask them. Number fourth point and the most important point is don't ask about the offered CTC. जब भी आपको कोई पहला कॉल आता है, never talk about offered CTC कि कितना CTC दे रहे हो आप. अगर she asks that आपका CTC कितना है अभी, you can mention the current CTC. Expectation में अगर वो पूछते हैं, we will discuss that. Generally first call में नहीं पूछते expectation, they'll only ask about your current CTC. और अगर वो सामने से कुछ पूछते नहीं है, you can't actually ask them on the very first call. So keep that thing in mind. Always ask them to share details on email. उन्होंने आपको JD बता दिया, थोड़ा आपने सुन लिया, notes भी बना दिए, but again there's a chance of human error, right? So always ask them that you have my mail ID, right? आपके पास मेरा mail ID है, आप मेरे को एक detailed JD भेज दो, so that you have everything in writing. It is because HR जब call करते हैं आपको and then they don't sort of follow up or they like cut loose you, you won't have anything to stand chance, right, against the company. So at that point in time, it's very important that आप return में उनसे email ले लो and you ask them to share the details, the JD details over an email. Then if you are busy, right, don't sort of consider that ये एक ही call मिलेगा मेरे को, अगर मैं अभी बात नहीं करूँगा तो शायद ये opportunity चली जाएगी. ऐसा नहीं होगा. The opportunity will stay by. If you are busy and अगर वो random call है, आपको पहला call है, you can always mention that hey I am little occupied. Do आप ऐसे don't just talk it with half mind, right? Be fully attentive or at a peace place whenever you are talking. और अगर आप वो जगह पे नहीं हो तो always give them some time to call you back again. They will surely call back. Moving ahead. Questions asked during tele interview. Again, this part is random. I am not talking anything about scheduled telephonic interview. Yeah. So always keep it crisp and short. Number one, are you looking for a job change? So they will always ask this question that, hey, are you looking for a job change? Always don't be over optimistic or don't sound very lucrative, because at that point in time you are already in the process, right? And there might be a chance that you are lowering down your CTC by showing your desperation for the job. So at that point in time you can mention that yeah मैं देख रहा हूँ job के लिए, I'm planning to have some good opportunity outside, but मैं actively नहीं देख रहा हूँ, but if something is good enough for me I will surely consider that. This is a very important point which you should actually mention. Never mention about that you are actively looking for job, और आपको अभी current job आपका कितना भी अच्छा ना हो, या you are not enjoying or leveraging the opportunities in the current scenario. Don't mention that on a first call, or rather on any of the interview call, right? You can always say them that yeah I'm not actively looking it, but maybe like I'm ready for the opportunity if the opportunity is challenging enough for me. So that is the right way to answer that question. The second question they might ask is, have you ever heard about company? Never say no. Never ever say no, because you have applied it somewhere or they have got some sort of a resume from various sites, right? So वो point in time you can't say that nahi maine nahi suna hai, because that shows that you are not updated in the market.
जहाँ पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपको पता भी नहीं है कौन सी कंपनीज में है, तो आपके लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा। ऑलवेज अगर आपको नहीं पता है, you can always say them that yeah I know, but if it will be great if you can like explain it in detail, because I know a little bit about it, I have heard about it, but if you can walk me through the details I'll be more than happy, and she'll take it. Won't be, I have done it by myself, like मैंने भी बहुत बार ये चीज किया है, right? I've done it few times and it actually worked, right? So you can use this technique. Okay, the third is, can you please give overview about the current role? So they will always ask you about what is your current role, how are you performing in that. So keep it crisp and answer honestly, because see what will happen is she is an HR person. वो आपका ना रिपोर्टिंग मैनेजर होने वाला है, ना वो आपका फंक्शन में या व्हाट आई कैन से आपके टीम में काम करने वाला है। उनको भी ज्यादा डिटेल नहीं पता है, तो आप पूरा अपना मत बताना कि यू आर डूइंग दिस इन योर करंट जॉब एंड आपका ये रोल है, वो उतना उनको समझ में नहीं आएगा। जस्ट कीप इट क्रिस्प, राइट? एकदम क्रिस्प रखो। एज आप पहले जेडी पूछोगे उनसे अगेन, ओके, देन एट दैट पॉइंट टाइम अंडरस्टैंड फ्यू कीवर्ड्स और वही आप बोल दो कि हाँ मैं मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी में ये रोल है, ऐसा करता हूँ। कीप इट क्रिस्प एकदम। डोंट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एक्सटेंड इट मोर देन अ मिनट और सो। आप पूरा मतलब जैसे एक टेक्निकल पर्सन को या जैसे फाइनल राउंड में आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो अबाउट योर करंट जॉब, डोंट डू इट इन द वेरी फर्स्ट कॉल, जस्ट कीप इट क्रिस्प। The fourth and the important part is they'll ask about what is your current CTC and notice period. ऑलवेज मेंशन ट्रू व्हाटएवर इट इज। अगर आपका नोटिस पीरियड 60 डेज है, 90 डेज है और वो ऐसा कह रही है ओ हम तो 30 डेज के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, तो यू कैन से दैट हाँ 30 डेज है। यू कैन बी लाइक क्या आई हैव अ नोटिस पीरियड ऑफ 60 डेज बट इट इज नेगोशिएबल डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट गोस। तो वो चीज आप कर सकते हो, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यू कैंट एक्चुअली लाई, राइट? एंड इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट करंट सीटीसी, आप जो भी अपना सीटीसी है इंक्लूडिंग योर फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वो आप अच्छे से उनको ब्रेकअप बताओगे। बिकॉज सी अगेन इफ यू लाई, आगे जाके आपको जब बिल सबमिट करने होंगे, सारे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के सारे सैलरी स्लिप सबमिट करने होंगे, वो पॉइंट इन टाइम पे यू विल गेट कॉट एंड यू डोंट वांट टू गेट कॉट इन द कंप्लायंस पार्ट। आपका हायरिंग हो गया, सब हो गया, और फिर 1 लाख आपने ज्यादा बता दिया, उसके वजह से दे विल रिवोक योर ऑफर। सो ऑलवेज एक्चुअली मेंशन व्हाटएवर व्हिच इज ट्रू, राइट? यू कैन मेंशन दैट हाँ एड ऑन मेरे को 2 लाख बोनस मिला, मेरे को 1 लाख बोनस मिला जो मेरे सीटीसी में नहीं है बट आई अर्नड इट। यू कैन मेंशन दैट ऑफ कोर्स, बट सीटीसी जो भी है ऑन पेपर आप उतना ही बताओगे। इट विल बी लाइक एग्जैक्टली दैट विद द सेम ब्रेकअप। देन देयर इज एक्सपेक्टेड सीटीसी। they'll ask about the expected CTC. उसके regarding we'll talk a lot more in the coming slide, but abhi ke liye whenever they ask you about expected CTC, you can tell that I don't have any such figure in mind, depending upon the complexity of job and how challenging the role is, I'll decide, but I'll go with the industry standard. अभी आप इतना research कर रहे हो, interview prep, pre interview का जो research का हमने बात किया, वहाँ पे ऑफ कोर्स यू विल एनालाइज, राइट, दैट आपका इंडस्ट्री में कितना हाइक यूजुअली चलता है, आपके कॉलीग्स या आपके जो भी फ्रेंड्स है, जो भी आपके रिलेशन में, राइट, वो कैसे स्विच कर रहे हैं। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट रफली मेरे इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस पे इतना हाइक मिलता है। तो यू कैन मेंशन दैट फिगर दैट हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक अराउंड 30 to 45% ऑफ हाइक फ्रॉम माय करंट सीटीसी। अगेन आप ये नहीं बोलोगे कि अगर आपका करंट सीटीसी 10 लाख है, यू वोंट टेल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग 13 लाख to 15 लाख, नहीं, दैट वुड साउंड नॉट गुड। व्हाट यू विल से इज यूल करंट सीटीसी तो आपने मेंशन कर ही दिया जब उन्होंने पहली बार आपसे बात किया। this point in time you'll mention that I'm expecting 30 to 40% hike on my current CTC. That's it. You won't speak any numbers here, okay? It's a very first call, so don't speak up numbers. No figures at all. Last but not the least, any specific reason for the shift, right? Again, this particular part we discussed in the prep part, right? About you have to be a hero, like we were discussing about the sides of being a hero of our own, right? तो वो point in time पे you have to understand that why you want to move, why you want to actually take into consideration different opportunity। और अगर ये opportunity जो है अगर ये आपको मिल गई, तो आप आपका जो vision है 5 साल का 10 साल का, आप उधर पहुंच रहे हो या नहीं, at least you are on a right track or not। So you can always mention at this point in time, you can't actually you shouldn't actually mention in detail, but at least you can say that see the thing which I have written, right, no specific reason at all, but the role you mentioned is something which is in line with my future goals, and even the industry in which the company is on high growth scale. So that is what exciting for me, and that's why I want to be a part of it. Again, it will be a good sort of an answer, because यहाँ पे आप
ऐसा नहीं कह रहे हो जरा भी कि एग्जिस्टिंग जॉब में आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड और मेरा करियर नहीं बढ़ रहा है, सीटीसी नहीं बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई यू कांट बी दैट बोल्ड, राइट? Yes. You have to find this way to actually answer that in a different manner, which I have mentioned here. Any questions for me? So I'll ask everyone to go on mute, please. There's sort of a disturbance which is there in the background. Yeah, thank you. Any questions for me? So जब आपका पहला random call भी होगा, right? तो they will ask you that अच्छा आपको कोई question है मेरे end से, तो of course you have to ask few questions. ये पहला एकदम interview का telephonic round है which is random, okay, which is not at all scheduled. So consider that fact that आप कौन से phase में हो, उस हिसाब से you don't want to ask the most important question in the very first round. So हर round के लिए अपना एक questionnaire बना के चलो, which you feel that at this point in time it will be important for you, right? So again, like when they ask you and when they ask you an open-ended question, what you can say is number one, by when shall I expect the next communication from your side? मतलब कब अब next step क्या है, मतलब which I have written, right? क्या अब कैसे क्या communication आएगा आपके side से, कब होगा next round? You can ask that question. You can also ask what shall be the next step for the process of selection. You can ask that कितने round होने हैं, क्या क्या round होने हैं, कितना time लगेगा वो process में. You can ask such questions on the very first round. It's fine. Then there is please share across all the details over an email. If you haven't mentioned that earlier, तो आप end जब call कर रहे हो and when she is asking that आपके पास कोई question है, at that point in time you can mention that yeah, you can share across all the detail over an email. Correct. Then it is like or you can ask just wanted to check if you have my updated CV, because what happens is कई बार आप नौकरी पे update कर देते हो, CV लगा देते हो, फिर आप भूल जाते हो, फिर 7-8 महीने बाद शायद आपने एक और स्विच कर लिया या आपका एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन हो गया, तो आपका पुराना वाला सीवी उनको मिलता है, राइट? तो आप हमेशा वो क्वेश्चन उनको पूछो कि आपके पास मेरा अपडेटेड सीवी है या नहीं है। अगर अपडेटेड है तो उसमें रीसेंट पोजीशन क्या है, कैन यू प्लीज चेक इट एंड कंफर्म टू मी। अगर नहीं होता है तो ऑलवेज आस्क देम दैट हे प्लीज शेयर अक्रॉस जेडी, और जब आप जेडी भेजोगे मेरे को मेल पे, मैं आपको मेल पे मेरा अपडेटेड सीवी भेजता हूँ। just have that conversation, make sure that you are they are actually having the updated CV of yours. Then it can be I might have some questions regarding the deliverables, but nothing as of now, because you also understand that वो जो लड़की है या लड़का है वो HR टीम से है, राइट? उसको अभी आप टेक्निकली पूछोगे कि जावा में क्या कोड करना है, कौन सी लैंग्वेज पे काम करते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं रहेगा। बट एज आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो यू कैन ऑलवेज बी लाइक एज ऑफ नाउ आई एम क्लियर वट एवर आई वांट टू नो फ्रॉम एन HR परस्पेक्टिव। अगर आगे जाके कुछ होगा मेरे डिलीवरेबल्स के बारे में तो वो मैं आगे मेरे टेक्निकल राउंड्स में पूछ लूंगा, बट थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन एंड इट इन अ सॉफ्ट टोन. So these are few of the techniques which actually you can use, right? अब आते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू, द शेड्यूल्ड वन। अब समझ लो आपको मेल आता है या आपका ये पहला कॉल हो गया, उसके बाद HR कहती है ओके अब हम टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे जहाँ पे मेरा एक जैसे आपका फॉर एन एग्जांपल योर रोल इज सेल्स का रोल, ठीक है? तो दिल टेल दैट पहला रोल सेल्स, जो आपका ऑलरेडी आपके जैसा काम कर रहा है, आपका जो टीममेट बनेगा है, आपका टीम में सीनियर है, वो आपका पहला राउंड रहेगा। एंड दैट इज यूजुअली आपका मैनेजर नहीं, आपका मैनेजर विल ऑलवेज टेक अ जूम कॉल और इन पर्सन मीटिंग। वो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू वो लोग लेंगे जो आपके लेवल पे है या आपके लेवल से 1 या 2 पॉइंट ऊपर है, करेक्ट? सो दिस इज शेड्यूल्ड वन, ओके? सो अगेन लाइक आपको पता है कि 1:30 बजे किसी का कॉल आने वाला है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉल, राइट? सो एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हाट यू कैन डू इज नंबर 1, you have to make sure that you are at quiet place. Number 2, be nervous but not too much, okay? Now because आपको जब 1 बजता है, सवा बजता है, and you consider right that अभी मेरे को 15 मिनट में कॉल आएगा, you get anxiety, you get nervousness, right? Being nervous is good but don't get panicky, okay? Just stay calm and just focus on whatever you are doing. Be ready before 10 minutes. 10 मिनट के पहले सब रेफर करना, सब रीड करना सारा बंद कर दो, and just sit ideally, walk or maybe have tea or water, whatever you want to have, right? And just be ready. Then don't again like scheduled one में don't ask the offered CTC, because वो देखो आपका सीनियर है, वो आपके जैसा वो सेम काम कर रहा होगा, राइट? बट एज उसको वर्क एक ज्यादा है, ही माइट बी हैविंग 15 लाख का पैकेज और आपको 13 पे वो लोग हायर कर रहे हैं। तो अगेन लाइक उसको मत पूछो कि कितना मेरे को CTC दोगे, उसके हाथ में ही नहीं है। जिस बंदे के हाथ में ही नहीं है तो व्हाई वुड यू आस्क देम, राइट? वो बंदे के हाथ में ही नहीं है CTC देना, ही इज जस्ट इवेल्युएटिंग कि हाँ ये सेल्स कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये एक अच्छा टीम प्लेयर है नहीं है। उसके मैनेजर ने उसको बोला है कि एक बार इसको कॉल करके आप समझ लो इसका प्रोफाइल कैसा है। ही डोंट इवन हैव द पावर टू एलिमिनेट, वो सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट, इसका शायद स्कोर फिर आगे कंसीडर भी होता है, बट द थिंग इज ही वोंट इवन हैव पावर टू एलिमिनेट यू। सो अगेन लाइक कंसीडर दैट एंड डोंट आस्क हिम फॉर द CTC.
always use headphones or earphones if you are comfortable, because वो एक अच्छा medium रहता है to actually converse, right? And you will also, अगर पीछे से कोई आपको बुला रहा है या पीछे से, तो वो आपको आएगा नहीं, because आपके दोनों कान में वो होगा, तो there will be a noise cancellation for you also, which is like good thing. Sit back, relax and keep your calm. ज़्यादा टेंशन मत लो and just go it with the flow, right? अब जब आपका स्केड्यूल टेली इंटरव्यू होता है, उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना? ये जेनेरिक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ये कोई एचआर के जेनेरिक क्वेश्चन नहीं है. दिस आर वेरी स्पेसिफिक एंड दिस इज फ्रॉम समवन हु इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर टीम, राइट? तो वो पॉइंट इन टाइम पे दे विल आस्क यू दैट व्हाई यू वांट टू स्विच नाउ. अभी क्यों स्विच करना है, कल नहीं, परसों नहीं, आज ही क्यों स्विच करना है? आई विल टेल यू वन ऑफ द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड इन माय इंटरव्यू, where so I was interviewing in Airtel, right? Airtel business. तो वहाँ पे जो HR लीड थी एपेक की पूरी, she actually asked me that अभिषेक, मेरे को एक बात बताओ, आपको एयरटेल में एक महीने पहले क्यों नहीं आना था और एक महीने बाद में क्यों नहीं आना है, आपको अभी क्यों आना है? Why would I give you a chance right now? एक महीने बाद क्यों नहीं और एक महीने पहले क्यों नहीं? So again, like वो पॉइंट इन टाइम पे you have to act smart, right? आपको एक अच्छा प्रिपेयर्ड आंसर देना है. So the answer which I gave, right? So I gave is, देखो, मैं मेरा प्रीवियस जॉब में जितना भी मेरे को नॉलेज मिलना था वो मिल गया है. अब मेरे को लगता है मेरा लर्निंग कर्व जो भी है वो पीक पे आ गया है. अब वो स्टीप नहीं है, ना ही वो शैलो है, बस वो प्लेटू बन चुका है अब. सो द थिंग इज आई वांट टू अपग्रेड नाउ. सो इसीलिए मेरे को अभी जाना है, बिकॉज अभी एग्जैक्टली ये पॉइंट इन टाइम है कि वेयर आई कैन जंप, मेरा ग्राफ ऊपर जा सकता है, ठीक है? अगर मैं एक महीने बाद जाऊंगा तो वो मैं प्लेटू को एक्सटेंड कर रहा हूँ. तो इसीलिए एक महीने बाद भी नहीं, एक महीने पहले भी नहीं, इसीलिए मेरे को अभी स्विच होना है. सो अगेन, लाइक यू हैव टू कम अप विद द रीजनिंग, राइट? एंड दिस वाज द वेरी गुड आंसर व्हिच आई आल्सो पर्सनली बिलीव दैट मैंने वो आंसर बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया. बिकॉज द थिंग इज, एट दैट पॉइंट इन टाइम दे विल आस्क यू और दे विल ड्रिल यू, but you have to be very sure that, because see, whatever I have written, right, if you can read it in the slide, because I believe role and opportunity is challenging and my skill can be used at the fullest potential. A lot to learn. मेरा लर्निंग कर्व जो अभी है यहाँ पे, वो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मैं सेट हो चुका हूँ ये वाली जॉब में, बट लर्निंग कर्व समवेयर आई फील दैट इट्स नॉट इन द डायरेक्शन व्हिच आई वांट. सो मेरे को अब अपने आप को अपग्रेड करने का एंड अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने का मौका चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट्स हाउ लाइक यू शुड टैकल इट. The second part is any achievements in the current role. तो आपको प्रेप के पॉइंट पे इसीलिए हम वो हीरो की बात कर रहे थे, बिकॉज यू हैव टू प्लॉट डाउन फ्यू ऑफ द अचीवमेंट. कुछ सक्सेस स्टोरी बताओ और हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड स्टोरी बताओ. मैंने सीवी में भी आपको बोला था, जब भी रेज्यूमे आप बनाते हो रिजल्ट ओरिएंटेड बताओ. दैट 20% इम्पैक्ट रहा है, या आई इंक्रीज द सेल्स एफिशिएंसी, व्हिच इज गुड, बट हाउ मच? बाय 20%, बाय 15%, व्हिच रिड्यूस द टास्क बाय 30%. तो ऐसा आपको रिजल्ट्स के साथ सक्सेस स्टोरी बतानी है आपके जो भी अचीवमेंट्स है करंट रोल में, राइट? और अगर आप फ्रेशर हो तो इट माइट बी रिलेटेड टू योर कॉलेज फेस्ट और इट माइट बी एनीथिंग, राइट? एज आपको कॉर्पोरेट का एक्सपोजर नहीं है, दे माइट आस्क यू अबाउट, अच्छा चलो एक अचीवमेंट कॉलेज में बताओ आपका कैसा रहा, क्या रहा. तो अगेन मतलब वो नंबर और स्टेटिस्टिक्स के साथ बताओ, आप जस्ट जेनरिक फैक्ट्स मत थ्रो करो उनपे. देन द थर्ड पार्ट इज, हैव यू वर्कड इन अ टीम और मैनेज्ड वन? सो बहुत जो एक्सपीरियंस folk होते हैं जिन्होंने मैनेज किया है, they can actually tell, right, that हाँ, I've managed one team. So whatever it is, just be realistic. Whether you have or not, you can always mention few instances from previous experience. So देखो अभी ऐसा होगा कि एक फ्रेशर को पूछते हैं हैव यू वर्कड इन अ टीम और मैनेज्ड वन, तो फ्रेशर तो कहेगा ना कि मैं तो कहाँ पे मैनेज करूँ, मैं तो कहाँ, क्यों मैनेज तो कर सकते हो ना. यू कैन मेंशन अबाउट कॉलेज फेस्ट जो आपने मैनेज किया, या यू वेर अ पार्ट ऑफ, हाउ यू डेल्ट विद ऑल द डिलेमास, कैसे लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से यू वर नॉट एबल टू डिलीवर बट यू प्लेड एज अ वेरी गुड मेंबर. सो यू कैन एक्चुअली मेंशन दिस थिंग. एंड सेम अगर आप प्रोफेशनली भी हो, अगर आपने मैनेज नहीं भी किया है टीम, तो हमेशा एक दो इंसिडेंट ऐसे रखो जहाँ पे यू कैन टेल देम दैट या मैं अपने पास से एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा which just came in my mind, because it should sound like you are being sort of a prompt, right? but वो actually दिमाग में ही होगा आपके पहले से, because you have come with a good preparation, right? तो वो point in time पे you can mention about any of the previous instances which you had. How will you be as a key contributor to the team? Again, mention the USPs which you have and what will you bring to the table. जो आपके पास दो तीन स्किल्स है जो आपने अपने करंट जॉब से या कॉलेज से सीखी है, which might differentiate और which might benefit your entire team, तो वो चीजें आपको यहाँ पे बोलनी है और वो चीजें आपको यहाँ पे डिफेंड करनी है, राइट? Domain related question, if you are from finance, if you are from marketing, if you are from HR, or if you are from engineering or any other degree, right?
they will surely ask about some domain कि क्या चल रहा है ये फील्ड में, do you have any idea? तो again वो prep वाला part, again it will be very helpful because आपने already industry के बारे में prep कर लिया है earlier, because whenever you are applying or whenever you wanted to be in this particular interview, so वो आपने prep कर लिया था, तो again you will be able to nail that. Correct? Why? Yes, they will always mention about कि why are you choosing our company, इतना market तो बहुत तेज चल रहा है, इतना job opportunity है, आपको क्यों यही company में आना है. So you can always mention that. See, few of the things which I've also written, right? Number one, mention about your role. Mention that जो आप role offer कर रहे हो वो unique है market में, हर कोई नहीं दे पाता है, so that's why that's what interests me. Number two, आपका जो industry में हो, आप जिस industry में हो, that industry is growing and I want to be a part of that growing industry. नंबर थर्ड, आपका कंपनी का ग्रोथ प्लान बहुत अच्छा है और मुझे पर्सनली उसमें बिलीफ है, राइट, दैट वट एवर योर कंपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड द लास्ट मोड इज दैट आपके पास जो स्किल सेट है वो कंपनी का विजन पूरा करने में हेल्पफुल होगा. And you strongly believe that you will be able to add value to the team and you will be able to love to actually make a part of that growth path which they have for themselves, right? So you can mention on all those things. Again they will ask wo wale round mein ke do you have any questions for me, then again like it becomes difficult, right? Again समझ लेना ये final round नहीं है आपका, तो again आपका जो अच्छा questions है that you will save it for later, right? So you'll keep that thing in mind. So number one question which you can ask is by when shall I expect next communication? Again you can keep that question because वो question हमेशा चलता है, ये हमेशा एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो फाइनल राउंड तक ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, चलता है कि कैसे करना है, अनलेस वो लोग पहले से ही कह देते हैं कि नेक्स्ट राउंड में वैसा होगा, तो यू कांट आस्क, राइट? बट इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नहीं लिखा और 4-5 लिखे हैं, तो वो पॉइंट इन टाइम पे यू हैव टू रियलाइज उसने क्या क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, तो आप कौन सा और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, एज मैंने बोला, राइट, कि वो मैनेजर लेवल का बंदा नहीं होगा, वो आपका सीनियर होगा और आपके जैसा ही काम करेगा बट एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, बाकी आप लोगों का रोल सेम होगा. तो अगेन यू कैन आस्क हिम दैट आपका दिन कैसे जाता है, आपका एक दिन डिफाइन करो ये कंपनी में, हाउ इज योर डे गोज ऑन, हाउ डू यू मैनेज ऑल द टास्क, कैसे क्या करते हो. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच यू कैन आस्क, राइट. द थर्ड क्वेश्चन इज विच यू कैन आस्क, हाउ स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड इज योर एलडीपी. एलडीपी होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, उनका जो डिपार्टमेंट पूरा होता है, राइट. सो अगेन व्हाट हैपेंस इज वो आपका ये दिखाता है कि अच्छा चलो मैं आपकी कंपनी में तो आ गया, बट समझ लो कि अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कुछ नया मार्केट में लैंग्वेज आ रहा है, ठीक है, सी के बाद मतलब और कुछ भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आ रहे हैं. तो आपके कंपनी में ऐसा लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेल है क्या जहाँ पे आई कैन गेट ऑल दिस नॉलेज? बिकॉज अगर मैं आपके कंपनी पे ओल्डर टेक्नोलॉजीज पे ही काम करता रह गया तो मतलब एनी कंपनी शुड हैव दिस एलडीपी का डिपार्टमेंट, राइट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का. तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या है, ऐसे मेरे को सर्टिफिकेशन करने हो तो क्या क्या रहता है, आपका कंपनी उसमें सपोर्ट करता है नहीं करता है, अपना इंटरनल रिसोर्सेज कैसा है टू लर्न मोर लैंग्वेजेस, ये सारा इज वेरी गुड क्वेश्चन विच यू कैन आस्क इन दिस राउंड बिकॉज वो आपके लेवल पे ही है, तो ही माइट बी using all these resources to excel in his work. तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. And the last one is I might have some question regarding the deliverables but nothing as of now. You can ask that मेरे पास कुछ questions है जो मतलब ऐसे हैं कि deliverables के हिसाब से, but mostly आपने clear कर लिया है, पर मेरे को लग रहा है कि जैसे जैसे मैं रोल में आऊंगा या जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वो ऐसे वैसे मेरे को क्लियर होते जाएंगे, बिकॉज कुछ चीजें ऐसे होंगी जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा. तो यू कैन से दैट इन अ वेरी पोलाइट नोट एंड जस्ट एंड योर कन्वर्सेशन देयर. अब आता है जूम इंटरव्यू. सो ये सबने देखा होगा, राइट? ये वीडियो बहुत लेजेंडरी वीडियो है एंड दिस गाय इज आल्सो लाइक सम गवर्नमेंट गाय, ओके, पॉलिटिशियन, और वो अपने नेशन को एड्रेस कर रहा था और पीछे ऐसे बच्चा आ गया, तो दैट डजंट साउंड राइट, राइट, बिकॉज नहीं लगता है वो प्रोफेशनल. एंड देखो अगर ऐसा नहीं है कि आई थिंक दैट यू माइट बी मेकिंग दिस मिस्टेक्स, बट अभी अभी इतना बड़ा बंदा भी ये मिस्टेक कर सकता है, राइट? तो फिर वी शुड ऑल्सो take into consideration that we also have to be careful while we are choosing any of the place for the Zoom interview, because Zoom interview is the future. either आपका Zoom interview final round होगा या Zoom interview आपका सॉरी either आपका final round Zoom interview होगा या final round आपका in person interview होगा, but this is something which is like you are on the verge of the final round, right? So again what you can do is use plain background or use themes. जैसे मैंने theme use किया, आप देख सकते हो मेरा blur है, right, which you can see it in the back. So you can use such themes if you want, right?
गुड लाइटिंग अगेन, कि लाइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, आपका लैपटॉप सही से रखा हो, where you can explain, where you can say it, right, everything. So again you have to consider that shit. नेवर सिट ऑन बेड विद पिलोज, बेड पे कभी भी मत बैठो आप, बिकॉज अगर पिलो के ऊपर आपने लैपटॉप रखा, वो गिर गया, हिल गया, आप मूव कर रहे हो, इट वोंट साउंड गुड, राइट? So you always have to make sure that you are sitting on a table, either on sofa, either on chair, but you are keeping that laptop on table and on a steady position, so that वो hindrance ना हो आपका. And the fourth and the most important is internet connectivity. Of course आपका इंटरनेट रही रहेगा तो आपका, देखो, जैसे इंटरव्यूज में जब कोई भी इंटरव्यूअर होता है, राइट, वेन एवर ही टेक्स इंटरव्यूज, तो उसके अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, जैसे आधा घंटा उसने ए को दिया, आधा घंटा उसने बी को दिया. अगर अब वो आधे घंटे में आपका 5-10 मिनट इंटरनेट कनेक्टिविटी चला गया, तो वो वाला जो इंटरव्यूअर है, ही वोंट एक्सटेंड योर टाइम, बिकॉज द नेक्स्ट कैंडिडेट वुड बी वेटिंग फॉर हिम. तो वो आपका टाइम कर देगा, और वो आपका टाइम कट कर देगा, तो वो आपके बारे में जान नहीं पाएगा, एंड यू आर लूजिंग योर चांस टू शोकेस, राइट? कि जब आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड इंटरनेट कनेक्टिविटी आप वो चीज बोल नहीं पाओगे, देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड यू विल बी मिसिंग आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी. सो जूम इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे परसिव्ड नोशन है विच आई वांट टू क्लियर. ओके, सो लोग ऐसा भी कहते हैं कि नंबर वन, कि कभी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए हमें कि हमको सुनाई नहीं दिया, ऐसा करके. नहीं, ऐसा नहीं होता है. यू कैन ऑलवेज आस्क हिम. और मैं तो ये कहता हूँ कि कभी आपको बहुत टफ क्वेश्चन, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, राइट? एंड डिजिटल एरा में वी हैव प्रॉब्लम, सो वी हैव डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर दैट आल्सो. सो समझ लो कि ऐसा होता है कि आपको कोई वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और आपको उसका आंसर नहीं आता है, या यू नीड सम टाइम टू एक्चुअली आंसर दैट क्वेश्चन, राइट? तो आप हमेशा क्या कह सकते हो, सर आई थिंक आई लॉस्ट यू, कैन यू कम बैक अगेन? एंड आपको 10 सेकंड मिल जाएंगे सोचने के लिए कि क्या बोलना है. एंड क्योंकि डिजिटल चीज़ों का आप लेवरेज लो, मतलब अच्छी साइड है उसकी, तो अगर और सच में ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम दैट सर मेरे को सुनाई नहीं दिया, देयर वाज अ वॉइस ब्रेक, कैन यू प्लीज कम अगेन? बट हाँ, इंटरव्यू में ऐसा 10 बार मत करना, बट यू कैन ऑलवेज यूज इट 2-3 टाइम्स, कि आपको किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर नहीं आता है, राइट, आपको सोचने के लिए 5-10 सेकंड चाहिए, या यू नीड टू काम डाउन, तो आप उनको बोलो सर आई डेंट गेट यू, कैन यू कम अगेन? तो वो जब तक बोलेगा चार, और जब वो सेकंड टाइम बोलेगा तो और एक्सप्लेन करेगा, तो लंबा हो जाएगा वो क्वेश्चन, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट कि अब मैं क्या आंसर दूं और कैसे फ्रेम करूं. तो यू कैन यूज दिस एज अ प्रो टेक्निक. ओके, द सेकंड इज ऑलवेज आस्क इन द स्टार्ट इफ यू आर ऑडिबल. फिर ऐसा होगा आप बोलते ही जाओगे एंड यू आर नॉट इवन ऑडिबल, राइट? सो जब भी इंटरव्यू स्टार्ट करो, हाय हेलो बोल दो एंड टेल देम दैट या एम आई ऑडिबल, लाइक एम आई परफेक्टली ऑडिबल टू यू. यू हैव टू ऑलवेज आस्क देम, बिकॉज डिजिटल एज में वी कांट एक्चुअली ट्रस्ट ऑन दी टेक्नोलॉजी, इतना ब्राइंड ट्रस्ट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है? सो यू कैन आस्क देम दैट इफ यू आर ऑडिबल और नॉट. Third is you can keep a glass of water handy and can drink with the same with the permission if you feel like drinking. इंटरव्यू कई बार ऐसे होते, जैसे मेरा गूगल का इंटरव्यू 1.5 घंटा चला था, तो वो पॉइंट इन टाइम में मैंने पानी पी लिया था बीच में. सो आई आस्क्ड दैट मैम प्लीज कैन आई टेक लाइक अ मिनट, आई जस्ट हैव अ वाटर. फिर ऐसा नहीं है खड़े होकर पानी लेने जाना है, आप पानी लेके ही बैठो उधर ही, एंड यू कैन हैव योर वाटर फॉर अ मिनट, और फिर यू कैन कम बैक. सो यू कैन ऑलवेज लाइक, बट यू हैव टू आस्क दैट परमिशन. ऐसे नहीं कि वो चालू है और आप पानी पी रहे हो कि वो बोल रहा है, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. बट यू कैन आस्क देम इफ यू वांट टू हैव वाटर, राइट? यूज म्यूट बटन व्हाइल नॉट स्पीकिंग. जब भी आप वो क्वेश्चन कर रहा है, राइट, आपको आप म्यूट दबा दो, बिकॉज कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा, ये वो जाएगा, तो उसको ऐसा लगेगा काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऑलवेज म्यूट इट. एंड व्हेन ओनली व्हेन यू आर स्पीकिंग यू हैव टू अनम्यूट इट, अदरवाइज यू कैन कीप इट ऑन म्यूट व्हेनेवर दे आर टॉकिंग, राइट? यू कांट वेयर कैजुअल टी शर्ट नहीं पहन सकते आप, जितना जॉब में भले, मतलब ठीक है आप लोग पहन लो टी शर्ट्स या शॉर्ट्स या वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, बट like during your interview at least you have to wear a shirt, or maybe like a freshly ironed shirt, or blazer if you want. Okay, blazer is not a compulsion as of now, but still, like for a professional say per se, you can wear a formal shirt or anything like that, but don't wear casual t-shirt, even though like you are applying for any designer role or something, right? At least for the first interviews you can be in that point. फिर आप job में जाओ, फिर जब आप team meeting ले रहे हो, तो आप ले लो t-shirts में कोई बात नहीं, because at that point in time everyone would be in that thing, but during interview you have to consider that as a very professional thing. Okay, so now we'll be talking more about this thing. Suppose आपका in person interview आता है, right, and this is how you actually walk down the aisle.
It's similar to walking down the aisle, right? Whenever you are going for an in-person interview. So again, I'll state few of the important things which I have like in mind. Just a second. Yeah. So number one, relax. Second is be yourself. Don't actually try to like don't be overconfident or don't be too nervous. Just be yourself. जैसे आप हो वैसे ही रहो. The third part is greet everyone. अगर आपके पैनल में चार लोग बैठे, you have to ऐसा नहीं कि good morning चार बार बोल दिया. But whenever you say good morning, you have to roll eyes on each and everyone, right? जितने भी लोग बैठे, you have to give them a good roll of eyes, and you have to make sure there's an eye contact, right? Fourth is keep the gentle smile. बहुत हंसना भी नहीं है और बहुत nervous भी नहीं होना है, but you can keep a gentle smile, as in that it would feel like you are approachable, right? So just that's it. Look into their eyes. So eye contact, which I mentioned, right? It is very much important. Last is always take permission before seating. Even though there are seats, right? And अगर आप वो बोल देते हैं सामने से please have a seat, तो आप बैठ सकते हो, तो कोई बात नहीं. But if they don't tell you, you can just tell them that sir, may I please? So they'll tell yeah, please. May I sit? का भी जरूरत नहीं है. You can just pull up the chair and you're like, may I please? तो आप बैठ सकते हो ऐसे करके. But do ask before sitting, right? Interview behavior. So again, like कौन सा interviews में behavior रहता है, which are very different, right? So I'll tell few of them which I have in mind through my personal experience. So number one is have a calm and relaxed expression. Expression plays a lot of role, right? So अगर some because it behavior science, right? There's interviewers are because वो लोग बहुत लोगों को interview करते हैं, right? So they actually understand the science behind the behavior. So you have to make sure that you are relaxed and calm, because expressions play a lot of role, right? If you are like showing your interest, or if you are like trying to converse, and if you are trying to debate based on the expression, it will actually सामने वाला उसको perceive करेगा वैसे, right? So you have to make sure that your expression is calm, relaxed, and everything. Then there's maintain steady eye contact. जब भी वो आपको कुछ पूछ रहा है, कर रहा है, don't look ऊपर नीचे, टेबल पे, हाथ पे, पैर मत हिलाओ, and maintain the steady eye contact. एकदम उससे eye to eye contact रखो, and if you want, you can even have a gentle smile and all. Interruptions can happen. ऐसा होगा वो सामने बैठ के चाय पिएगा. जैसे मेरा एक इंटरव्यू था फॉर माय कॉलेज, राइट? सो मेरा जब कॉलेज का इंटरव्यू था, कॉलेज के लिए मेरा इंटरव्यू था, वहाँ पे इट वाज एट 4:30, राइट, शाम को. और वो लोग सुबह से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं सारे कैंडिडेट्स का, एंड व्हेन आई केम बाय उनका चाय का टाइम हो गया. तो मैं गया, उन्होंने बोला हाँ अभिषेक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया. एंड एक प्यून आया, और प्यून ने उनको बोला सर चाय में कौन से बिस्किट खाओगे, क्या करोगे? एंड आई फिर मेरे को ऐसा लगा मैं चुप हो जाऊं या मैं बोलते जाऊं. बट मैं बोलता गया. आई एम लाइक ठीक है बोलते जाओ. लाइक इंटरप्शंस होंगे, या फिर उसका ध्यान इधर उधर जाएगा, या आपको लगेगा ही इज और शी इज डिसइंटरेस्टेड. बट वैसा नहीं होता है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट यू. इंटरप्शंस होंगे, सो जस्ट बी कूल विथ इट. या फोर्थ पार्ट इज पॉजिटिव जेस्चर्स इन मॉडरेशन. बहुत ज्यादा पॉजिटिव जेस्चर नहीं देने. यू हैव टू कीप दैट इन अ मॉडरेट मैनर, राइट? Sorry. Walk with an upright and confident attitude, right? So whenever you are walking, just stay upright, be confident. Whenever you are saying anything, just make sure that there's a proper eye contact and your expressions are relaxed. Address all the stakeholders by communicating. ऐसा होगा अगर पैनल इंटरव्यू है, चार पांच लोग आपके सामने बैठे, क्वेश्चन को एक ही पूछता जाएगा. एक दो लोग तो शायद कुछ पूछेंगे ही नहीं, बट दैट डजंट मीन यू विल इग्नोर देम. आप उसको देखोगे ही नहीं पूरे इंटरव्यू में. व्हेनेवर कोई एक क्वेश्चन आपको पूछता है जिसका आंसर लंबा होता है, राइट, so you can roll eyes over everyone actually, and you can address that answer, right? So you can do that. So जब आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, मे इट बी जूम और इन पर्सन, राइट, व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस? परसेंटेज अगर 100% होता है पूरा इंटरव्यू, राइट, सो क्वेश्चंस का कैटेगरी, सॉरी, ओके, जस्ट अ सेकंड. Okay.
So जब आपका इंटरव्यू होता है राइट 100%, तो उसमें ब्रेकअप क्या रहता है? there's some problem with this slide. I'll just show you here only quickly. Okay, so उसका ब्रेकअप क्या रहता है? Number one, 48% of the question which they will ask in the interview, it will be job related question. May it be आपका personal experience जो भी आपका existing रहा है वो. Second is more about the new role which they are offering, उसके related question. How are you performing your deliverables? वो वाले questions, correct? So they'll keep rolling around that, right? 38% questions will be personal experiences. They will ask about, tell me something about yourself. हॉबीज और वो सब नहीं आता है इंटरव्यूज में, राइट? बिकॉज प्रोफेशनल इंटरव्यूज में दे वोंट आस्क अबाउट योर हॉबी, रेयरली दे विल आस्क अबाउट हॉबीज, बट दे विल आस्क अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अगर आपका कोई ऐसा लाइफ का किस्सा सुना हो मजेदार, सुबह से हम बोरिंग चीजें सुन रहे हैं, सो अगेन दे विल आस्क समथिंग personal, right? So again we'll cover that in each and every aspect going ahead, but just to give you a gist about what you should expect. 9% would be negotiation and salary, joining date. उस पे लास्ट में अराउंड 9% क्वेश्चन उसके होंगे कि इतना सैलरी क्यों, हम तो इतना ही देते हैं, ये वो थोड़ा पार्ट रहता है इंटरव्यू का, दैट आल्सो विल डिस्कस. देन 5% इट विल बी अबाउट कंपनी नॉलेज. कंपनी नॉलेज ये लोग बहुत कम पूछेंगे फाइनल राउंड्स में, और दे विल जस्ट हैव यू अंडरस्टैंडिंग दैट आपको प्रोडक्ट्स पता है या नहीं, थोड़े बहुत, दैट्स इट. एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपनीज विजन, व्हाट इज द कंपनी इज हेडिंग टुवर्ड्स इन द फ्यूचर, राइट? So they'll ask about this thing, but rest company के बारे में इतना they won't ask you, right? Or they are not even expecting you to understand the company पहले से. So I'll tell you about job related questions, right? Okay, whenever you are in the final round, what sort of a question which they'll ask you, right? So number one, it will be, okay, there is some issue, I guess, that it's playing automatically. I'm not sure. Just give me a second. Okay, there's some issue. What I'll do is I'll just. Abhishek, it is visible, so you can keep It's continuing. visible, right? Yeah. Okay. So what I'll do is I'll. Yeah, perfect. So job related questions. So if I talk about job related questions, right? कि वो लोग क्या पूछेंगे आपको? Number one is they'll ask about what are the recent changes in the work domain. They'll surely ask about technology कहाँ जा रहा है, or what is your job profile, where the people are heading on. आपका वर्क डोमेन जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. जैसे अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज लोग सी पे काम करते थे, फिर लोग जावा पे आए, फिर लोग पाइथन पे आए, तो दे विल आस्क यू अबाउट अब पाइथन के बाद व्हाट इज नेक्स्ट, राइट? इट्स जस्ट फॉर द टेक्निकल गाइज. इफ आई टेल अबाउट फिनेंसिंग, अभी मतलब फिनेंस इंडस्ट्री में भी काफी चेंज आ गया है, वेयर अकाउंटिंग हैज चेंज लाइक इमेंसली, राइट? सो दे विल आस्क अबाउट कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. दे विल श्योरली आस्क अबाउट दैट थिंग. Second is they'll give you job role situational question. This is very important and 110% ये चीज आएगी ही आएगी. जॉब रिलेटेड क्वेश्चन का जो मैंने आपको बोला था, कितना परसेंटेज था? 48, राइट? 48 में से अराउंड 60% इसका ही रहेगा वेटेज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. they'll put you in some situations, एज इन दैट आप मैनेजर हो, ठीक है, अभी आपका टीम ने ऐसा ऐसा किया है, आपका टीम ने ये गलती किया है, चीजें एस्केलेट हो गई है, हाउ विल यू मैनेज इट? इफ यू पुट योरसेल्फ इन दैट शू, हाउ विल यू टैकल दिस सिचुएशन? या वो अपना एग्जांपल दे देगा. कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आई एम इनटू सेल्स, राइट? तो मेरे इंटरव्यूज में जब मेरे को लिए इंटरव्यूज, दे हैव आल्सो मेंशन दैट अभिषेक, यू नो, मैं एक डील पे काम कर रहा था, ये डील पे ऐसा ऐसा चीज हुआ. उसने मेरे को 5 मिनट पूरा डील का ब्रीफ दिया, एंड देन ही इज लाइक, यू नो व्हाट हैपेंड, वी लॉस्ट दिस डील. So I'm like, oh, that is sad, right? You lost the deal. Then they are like, अभिषेक तुम मेरे को 3 चीजें बताओ जो मैंने गलत करी, मैं क्या सही कर सकता था वो पॉइंट इन टाइम पे जो मैंने गलत करी. They'll put you in this situation. This is very important thing. So you have to make sure that
अगर आपको ये सारी चीजें पूछते हैं राइट, तो ये आपका अगेन गोज टू द प्रेप पार्ट। जब भी आप प्रेप में कर रहे हो, जेडी में जब भी आप देख रहे हो राइट, दैट ये मेरा डिलीवरेबल्स है, ये सारी चीज है, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट दैट अगर ये स्किल है तो जावा लैंग्वेज है, तो जावा में कौन से मेन एरर्स है जो हमेशा लोगों को तंग करते हैं। तो यू कैन शॉर्टलिस्ट दैट, यू कैन राइट दैट, यू कैन रीड अबाउट इट, यू कैन लर्न सम सिचुएशन, सो दैट जब भी ये सिचुएशनल क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट यू विल हैव सम ब्रीफ टू टेल राइट। They'll put you into some situation and they'll ask you to actually understand that how will you tackle that in situation. So these are very important question, and you have to make sure that you are practicing actually a lot, because this will help you right. Then they are like, how do your past skills shall help you ace this job? जो आपने past company में सीखा है right, how will it help you to ace this job? So you can always mention about the skill set. You can always build synergy about जो आपकी existing company कर रही है और जो आप नई company में जा रहे हो वो कर रही है वो. You can actually build a thing that yeah you both are going in that direction, but you have like more approach in this. So मेरे को लगता है मेरा ये skill आपने बहुत अच्छा. जैसे for an example, if you are going in a company where they are into growth phase, right? So they'll be like कि अच्छा ऐसा क्या skill है आपका जो ये job में काम करेगा. तो यू कैन ऑलवेज बी लाइक कि मैंने मेरे पास जॉब में ये चीजें करी थी, उसमें ये इम्पैक्ट आया था, एंड एज यू आर ऑल्सो ग्रोथ स्टेज राइट, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे सिनारियोज ये वाले जॉब में बहुत ज्यादा आएंगे, बट एज मेरे को वो सिनारियोज में प्ले अराउंड और मेरे को लूप होल पता है कि वहां से कैसे निकलते हैं राइट, सो आई विल बी एबल टू बेटर एस इट राइट. So you can mention those situations from the past though. Then what new value additions or impact you shall bring to the team. This is also very important part that समझो आपको टीम में ले लिया, बड़ा बड़ा कंपनीज जो रहता है they will ask you this questions, always they will ask you that how important you will be a part of a team, या फिर हम तुमको हमारी टीम में क्यों ले कि हमारी पूरे टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. तो अगेन यू कैन मेंशन अबाउट आपके प्रीवियस वाले एक्सपीरियंस के थिंग राइट, दैट इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आपको ये प्रॉब्लम थी, आपने ऐसे ऐसे टीम आपने ऐसे अपने आप को एज ए हीरो इवॉल्व किया, यू हेल्प योर टीममेट्स टू एक्सेलेट, और ऐसा हो गया कि आपने अपने पर्सनल गेन से ज्यादा आपने अपने टीम के गोल्स को समझा, तभी आपने ये किया वो किया. तो यू कैन मेंशन फॉर द सेल्स राइट, आई कैन गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल which I gave right. So ऐसा होता था कि मेरा टारगेट इज गोना बी, समझ लो मेरा टारगेट है 1 लाख रुपए महीने का, एंड मेरे टीम का टारगेट है 10 लाख रुपए, और हम लोग 10 लोग हैं ठीक है, तो पर बंदा 1 लाख. बट व्हाट हैपेंड इज 2-3 लोग नए ज्वाइन हुए, दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म. तो मैंने क्या किया, मेरा 1 लाख टारगेट हो गया तो आई स्टॉप वर्किंग. ओके मैंने क्या किया, 25 तारीख भी हो गई है, आई विल पुश जो भी नया आ रहा है वो नेक्स्ट महीने के लिए. वी कॉल इट एज अ बैग ओवर थिंग इन सेल्स, कि ये बंदा बैग ओवर कर रहा है एंड ही विल, वो 5 दिन क्लाइंट को ही मना कर रहा है ताकि 1 तारीख को वो लेके आए सारा पैसा और उसका नेक्स्ट टारगेट. बट मैंने वैसा नहीं किया बिकॉज मेरे को पता चल रहा है भाई मेरा टीम लैग कर रहा है, तो मैंने और क्लाइंट्स लिए और मैंने 120% अचीव कर लिया. उससे दो प्रॉब्लम हुई, एक तो कि मेरा नेक्स्ट मंथ का स्टार्टिंग एलिमेंट चला गया, वरना मेरे को 20% का सीधा बूस्ट मिलता स्टार्टिंग में अगर मैं ये चीज अभी नहीं करता तो. बट आई डिड इट बिकॉज मेरा टीम का फायदा हो रहा है ना उसमें. तो आई ऑलवेज पुट, ऐसा नहीं है कि मैं मेरा पर्सनल गेन एज इन मैं 15 घंटे काम करूंगा, मैं सबका लोड ले लूंगा, ऐसा नहीं. बट वेन एवर रिक्वायर आई ऑलवेज स्टेप इन एंड आई ऑलवेज हेल्प. सो ऐसा कुछ आपको सिनारियो बिल्ड करना है विद इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन पोर्ट्रे दैट राइट. Then it is about what do you think about your deliverables and role, can you please explain. वो आपको पूछे, this is like walking them through your JD. तो ये उनका ये मानना है कि समझ लो आपको मैंने JD दिया जो भी मैंने आपको पढ़ाया राइट, सो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट ये JD में से ये कितना समझा है और कितना ये रिलेट कर पा रहा है विद द एक्चुअल जॉब रोल. सो दे विल ऑलवेज आस्क अबाउट, अच्छा आपने JD पढ़ा है ना, तो आप मेरे को बताओ आपको क्या लगता है आपका काम कैसा होगा, आपको क्या लगता है ये ऐसा होगा वैसा होगा कैसे होगा. So they will ask you this question. So again like for that again prep वाला thing is very important, very very important. अगर वहां पे आपने अच्छे से काम किया ना तो ये कोई भी क्वेश्चन जब भी आएगा ना you won't find it very new right. आपको वो ऐसा ही रहेगा, बस आपका जो आपने ऑलरेडी प्रेप पे काम किया, you'll be just actually fetching the data from your mind, that's it. Otherwise you'll be having answers for each and every question. Then how well you foresee your career in the role going 5 years down the lane right. So इसके लिए आई हैव टोल्ड यू राइट, अगेन व्हाट विल प्ले इम्पोर्टेंट इज प्रेप. जब आप अपना मैनेजर है या आपके कंपनी में लोग हैं उनको जब लिंक्डइन पे स्पाई करोगे, उनको जब लिंक्डइन पे फॉलो करोगे देखोगे राइट, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये बंदे का ऐसा ऐसा करियर प्रोग्रेशन हुआ है, इसका मतलब ऐसा ऐसा करियर प्रोग्रेशन ये कंपनी में हो सकता है.
तो वो अगर अपना रिसर्च सही रहा तो whenever he'll ask you this thing, he or she will ask you this thing, you will mention the same thing कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ये करूंगा, उसके बाद मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। तो वो ऐसा सोचेगा जो सामने बंदा बैठा है कि हाँ इसका गोल, और हमारा कंपनी में भी ये, उसको थोड़ी पता है आप रिसर्च करके आए हो, उसको थोड़ी पता है आप 50 लोगों का लिंक्डइन देख के आए हो और आपको ऑलरेडी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में करियर ट्रेजेक्टरी क्या होता है, उसके हिसाब से होल्डिंग योर आंसर एंड यू आर सेइंग इट राइट। उसको तो वो आइडिया नहीं है, तो ही विल थिंक दैट नहीं ये तो सही बंदा है या सही बंदी है, बिकॉज द थिंग इज he or she wants, or he or she is actually foreseeing the career in the same direction which the company has a trajectory already at place, right? So this will actually give you a boost. तो अगर आपका रिसर्च सही होगा राइट, सो यू विल बी एबल टू गेट दैट आंसर। सो सारे आंसर आपके सामने ही है, it's just that it will involve a lot of research from your side and a lot of presence of mind to actually kick in. Personal questions, this will comprise like around 36% of your current sort of an interview, where they will ask about, tell me about yourself. So as I said, right, you have to tell, number one, you want to mention your name, you can mention it, it's fine. You have to mention your hometown, whatever your hometown is, right? You can mention about where you studied, maybe your graduation, post graduation, the sort of work ex you had. लाइक मैंने ये कंपनी में काम किया, ये कंपनी में मेरा ये रोल था, मैंने ये किया है यहाँ पे। यू वोंट टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, यू डोंट टॉक अबाउट नंबर्स, बस अब नॉर्मल जो आप काम करते हो ना, आप वही चीजें वहां पे बोलोगे। एंड यू वोंट say explicitly that and my hobbies is this. No, you are not saying your hobbies because the employer is not interested in knowing your hobbies. So आप hobbies नहीं बताओगे उसको, so you'll always be professional in the ways which you want to be, right? तो वहाँ पे you'll talk about, जैसे if I want to give my introduction, so I'll say like, hi, my name is Abhishek, I am from Jamnagar, but like due to small town, right, I was actually outside from home since 8 years. So I've been staying in like different cities, Mumbai, Bangalore, Delhi. I did my engineering from Gujarat, then I did my MBA from IMT Ghaziabad, which is in Delhi. Then I did my work in Mahindra Comviva, where I used to head market for Middle East, Africa, and Europe. And we were basically into analytics, and we were catering to the telecom operators across the globe. Post that, I thought that industry is shifting towards SaaS, right? So I moved into another job, which I thought it was very interesting for me, and I went into Browser Stack. In Browser Stack, I was there as an enterprise BDR for US market. So it was a good role. It was very good role. But then I was very happy with the role. But in the way, I got an opportunity to work with one of the best SaaS players in the market, which is Salesforce. So when that opportunity came by, so I thought, why not to explore that opportunity? And that too, it was very challenging for me because in Salesforce, I am heading a India sales region that is for the mid market. So currently I'm working there and it's going pretty well for me as of now. So that's it, like all about me. So मैंने ये वैसा रखा राइट कि मैंने करियर ट्रेजेक्टरी, बिकॉज आपका ऐसा भी होगा कई बार आपने 2-3 जगहों पे स्विच मारा है, तो यू कैन टेल दैट पहले मैं यहाँ पे था, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर मैं उधर गया, बीच बीच में आप अपना रीजनिंग भी देते जाओ, वहां पे गए तो क्यों गए, ठीक है। सो आप वो क्वेश्चन उसके लिए इजी कर रहे हो और आप अपना थॉट प्रोसेस एक कंसाइज वे में डिलीवर कर रहे हो, सो दैट विल बी वेरी इंप्रेसिव फॉर द अदर गाइस हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू, राइट? So it is very important on that part. Then they will ask you that what motivates you as an individual. So they'll surely ask you this question कि क्या motivate करता है। तो सी आंसर कैन बी जेनरिक, वही 4 चीजें जो हम कह सकते हैं, पैसा, या मेरा नॉलेज बढ़ना चाहिए, या वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए, या मुझे कंपनी फॉरेन भेज दे वैसा होना चाहिए। बट यू हैव टू आंसर, वो वही 4 है, ठीक है, जो सबको मोटिवेट करते हैं। एवरीवन इज मोटिवेटेड बाय मनी, एवरीवन इज मोटिवेटेड बाय गुड करियर, कंपनी पर्क्स, एवरीथिंग, ओके। But you have to mention that in a very smooth way, okay? As in like when someone asks you what motivates me, when someone asks me what motivates me, so I'll be like, a challenging job for me would be more motivated. A challenging job for me will act as a motivational factor for me because there's a lot of to learn, to grow, to explore. And if the product is good or if the industry in which I'm working is moving, right? So there's always exciting which is coming up on the next day. So it will motivate me to work more, to learn more, to understand network with people. तो मैं in short मैं वही कह रहा हूँ, right? That मेरे को अच्छा करियर चाहिए, मेरे को पैसा भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए। यू कैन से दैट मेरे को पैसा चाहिए, यू कैन मेंशन टर्म्स सच एज ग्रोथ, यू कैन मेंशन टर्म्स सच एज एक्सपोजर, ये सब पैसा और वही होता है, बट यू आर जस्ट यूजिंग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, राइट? वी एक्चुअली टेल दैट, तो यू कैन यूज दैट पार्ट। Failure or success incidences in life
सो प्रेप वर्क जो आपने हीरो के लिए कहानी बनाई है, यू हैव टू पोर्ट्रे दैट अगेन. सो वो आपके मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है. यू जस्ट हैव टू फेच इन द डेटा फ्रॉम देयर एंड जस्ट डिलीवर. अगर वो आपको कहते हैं कि फेलियर सक्सेस बता दो, यू ऑलरेडी हैव दैट इन माइंड. जो आपने प्रेप में बनाया था, यू जस्ट हैव टू स्पीक इट आउट लाउड, दैट्स इट, इन अ कॉन्फिडेंट मैनर. Then there are abstract personality questions. Okay, so ये कई बार ऐसा होता है, the companies such as Google, Salesforce and Gartner, ये जो बड़े नाम है, they actually play around with you for some abstract personality question to understand like what is your personality all about. So I'll tell you a simple example from my Salesforce thing. Okay, so ऐसा अभी इसका कोई की फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का, एंड दिस इज समथिंग वेयर यू कांट इवन प्रिपेयर. ओके, एंड दिस इज समथिंग वेयर आई कांट इवन ट्रेन यू कि ये चीज में आप ये करो तो, बिकॉज दे आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट. कोई उसका मतलब no base it has. Okay, they'll ask anything just to know that how you are thinking or what is your like sort of line of thinking in that part, right? तो मेरे को सेल्स फोर्स में इन लोगों ने पूछा था, अभिषेक, इंटरव्यू वाज गोइंग रियली वेल. ओके, एवरीथिंग वाज गुड. Suddenly the guy who used to head a region sales for Salesforce, he turned up and asked me that, Abhishek, tell me one thing, respect, recognition and money, if you are supposed to choose two, what will you choose? So he asked me this thing. Okay, so I'm like, I was like, okay, I'll choose all three of them, but because I want that's how I started my answer. Okay, I'll choose all three of them because I want all three of them, but as you are giving me an option of just choosing two, right, I'll choose respect and money. एंड तो उसने बोला, अच्छा, तो तुमको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए ऐसा, तो मतलब तुम कितना भी अचीव करो और मैं तेरे को कभी भी टीम में एड्रेस नहीं करूंगा, तेरे लिए तालियां नहीं बजाऊंगा, वो सारी चीज आपको चलेगा ऐसा? तो आई एम लाइक, नो, बिकॉज सी आई वांटेड दैट थिंग आल्सो, बट यू आस्क्ड मी स्पेसिफिकली कि दो चीज चूज करो, तो मैंने ये किया. तो बोले, अच्छा, तो तुमने ये क्यों चीज किया? तो मैंने बोला, मनी, बिकॉज मनी इज अ मोटिवेटर फॉर मी, सो मनी ऑफ कोर्स मैं चूज करूंगा. एंड आई चोज रिस्पेक्ट ओवर recognition is because recognition is very temporary thing, and respect I believe is permanent and it stays longer. For an example, अभी आपने एक क्वार्टर में सेल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और फॉर एन डेवलपर और फॉर एन आईटी पर्सपेक्टिव, आपने एक डिलीवरी, जो आपकी प्रोजेक्ट डिलीवरी थी, वो बहुत अच्छी की आपने और आपको बहुत रिकॉग्निशन मिला, ठीक है. और थोड़े टाइम बाद जब नेक्स्ट डिलीवरी आई, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया एंड यू फेल्ड मिजरेबली. ओके, मतलब पूरा प्रोजेक्ट हाथ से चला गया, एस्केलेशन हो गया, सब हो गया, एंड यू फेल्ड. देन क्या होगा? फिर आपको रिकॉग्निशन तो कोई देगा नहीं, और ना ही मतलब यू वोंट बी रिकॉग्नाइज्ड, राइट? इनफैक्ट यू विल बी, मैं आपको डीमीन करेंगे लोग वहां पे. बट रिस्पेक्ट इज समथिंग विच विल स्टे परमानेंट. अगर लोगों को आप पे फेद होगा ना, तो लोग बोलेंगे, यार ये तो ऐसे हो गया, वरना मतलब होता नहीं है. टू गिव अ क्लासिक एग्जांपल, राइट, विराट कोहली हैज रिस्पेक्ट. तो जब वो जीरो पे भी आउट होता है ना, पीपल डोंट जज हिम और पीपल डोंट से दैट ये बुरा प्लेयर है. दैट्स बिकॉज उसका रिस्पेक्ट है. रिकॉग्निशन इज मैन ऑफ द मैच अवार्ड. सो मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिलता है, नहीं मिलता है, डजंट मैटर, राइट? व्हाट मैटर्स इज द रिस्पेक्ट विच वी हैव फॉर हिम, राइट? सो अगर वो जीरो मारता है, तो हम ऐसे कहते हैं, हम अपने आप को ऐसे कहते हैं कि नहीं खेल पाया यार, कुछ प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज तो वो तो बढ़िया ही प्लेयर है. सो रिस्पेक्ट इज दैट थिंग. सो अगेन आपको, these are the questions which they will ask you, right? Abstract personalities में they'll also ask you, put you in some abstract situation, कि समझ लो मैं आपको जॉब दे देता हूँ, ये चीज हो जाती है, फिर मैं रिवोक कर देता हूँ, तो क्या होगा? यू हैव एनी प्लान बी? तो एक्चुअली दे वांट टू नो दैट आप और कौन सी कंपनीज को देख रहे हो. जैसे चांदनी ने भी मेंशन किया था, राइट, दैट 5 में से 3-4 बंदे तो लेते ही नहीं है ऑफर, जिनको मिलता है वो छोड़ ही देते हैं, तो दे गो फॉर सम अदर कंपनी, राइट? तो वो पॉइंट इन टाइम पे दे विल आस्क, दे विल ट्राई टू जज इट. So again, you have to answer it with the presence of mind which you have, and be very, see, being diplomatic is actually demeaned in the market, right? Whenever we be diplomatic, we have been asked that, yaar, itna diplomatic mat ho, just take your stand. But that doesn't work in the corporate environment, right? Corporate environment में आपको diplomatic होना पड़ता है again, so you have to be diplomatic at that point in sense, right? So you have to consider that part. Moving ahead, why would you take certain career moves which you took, right? So आपने, जैसे मैंने आपको बोला, राइट, जब मैंने अपने आप को डिफाइन किया था, तो आई ऑलरेडी मेंशन दैट पहले मैं इसमें था, फिर मैं इसमें गया, फिर मैं अब इसमें जाऊंगा, एंड आई इवन मेंशन द रीजन. तो अगर आपने वो क्वेश्चन बोल दिया है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में अच्छे से, तो ये चीज या ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं. सो यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन, और अगर आ गया तो अगेन यू कैन मेंशन दैट वे इन अ स्मूथ वे. How well you foresee your career in this role going for 5 years down the line? Again, that you can use it, right? वो वाला चीज
हमेशा याद रखना कस्टमाइज सीवी, हमने पहले भी सेमिनार में डिस्कशन किया था, कस्टमाइज सीवी फॉर कस्टमाइज प्रोफाइल। एंड द सेकंड इज दिस थिंग राइट, दैट एज आपने रिसर्च किया है 5 साल का डाउन द लाइन का, तो आप वही चीज बोलोगे जो आपने लिंक्डइन से पढ़ा है। company related questions, right? So company related question में they'll ask mostly about company initiatives, उनका current initiatives क्या है, what are their initiatives and your opinions about the same। जैसे गूगल में बहुत होता है कि वो लोग आपको पूछते हैं कि अच्छा गूगल का एक प्रोडक्ट बताओ जो आपको बहुत पसंद है, एंड whenever you mention something they're like उसमें 4 चीजें बताओ जो आपको लगता है बहुत सही नहीं है, तो आप कौन सी 4 चीजें, तो they will ask your opinion, that आपका टेक क्या है। देन देयर इज अबाउट कंपेटिटर्स, आपको कंपेटिटर्स के बारे में पूछेंगे, उसका यूएसपी क्या है हमारे कंपैरिजन में, ये वो। दिस विल बी वेरी लेस चंक ऑफ द क्वेश्चंस बट दे विल आस्क। देन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का ज्यादा चांस है पूछ सकने का कि दे विल आस्क अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, कहाँ पे जा रहा है, हाउ विल यू डू ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल, राइट। सो यू कैन कंसीडर दैट पार्ट। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नेगोशिएशन। जब सैलरी नेगोशिएशन आता है, राइट, हाउ टू टैकल द नेगोशिएशन। so while negotiation you have to keep few things in mind. Number one, you have to consider the industry, job role and market analysis. Again this goes back to the analysis part as in जो आपका analysis था which you did it right in the prep part. So again ये आपको काम आएगा इधर, because the thing is because you will be knowing right मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कितने लोग पे हाइक मार रहे हैं लोग, कितना सैलरी मिल रहा है, ये इंडस्ट्री में कितना चल रहा है, कौन सा। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू एक्चुअली आंसर दोस क्वेश्चन, राइट। सो इंडस्ट्री, जॉब रोल एंड मार्केट एनालिसिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट, दैट एटलीस्ट आपको आपकी राइट वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ, आप सब्जी मंडी जाते हो, राइट, व्हेनेवर यू गो टू एनी सब्जी मंडी, एक बंदे के पास जाके यू आस्क दैट अच्छा लेमन का कितना प्राइस है, दे विल टेल यू 20 रुपीज। हाउ यू नो 20 रुपीज इज राइट, because you have actually asked 10-15 other vendors, right, जो मार्केट में थे, आपने पूछा था सबको, सबने किसी ने 18 बोला, किसी ने 22 बोला, तो आपको लगा हाँ 20 रुपए सही है। तो वो आपको तब पता चला जब आपने मार्केट का एनालिसिस किया। तो वो बेसिक रोल के लिए भी वी कैन डू एनालिसिस, तो ये तो जॉब रोल है। सो यू हैव टू डू मार्केट एनालिसिस टू मेक श्योर दैट आपको आपका राइट वैल्यू मिल रहा है, करेक्ट। then three USPs to defend the ask। तो हमेशा देखो वो ऐसा बोलेगा ना कि नहीं जो आप मांग रहे हो बहुत ज्यादा है, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू कैन गिव, राइट। सो यू शुड हैव 3 USPs कि मैं मांग रहा हूँ इसलिए बिकॉज ये रीजन है, एंड रीजन कैन बी एनी, राइट। बिकॉज देखो इंडस्ट्री ऐसे शिफ्ट हो रहा है, मेरा स्किल सेट है वो बहुत कम है, या मैं बहुत अडॉप्टेबल हूँ, मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस में ये है, मेरा ये इंटरेक्शन रहा है, तो आई एम ब्रिंगिंग समथिंग ऑन द टेबल। सो 3 USP आपको हमेशा रखने हैं आपके पास, वेर यू कैन नेगोशिएट इट इन अ बेटर मैनर, राइट। ऑलवेज बी रियलिस्टिक। देखो हाइक लेना, सारी चीजें लेना इज रियली गुड, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर बीइंग रियलिस्टिक। जैसे आपको 100% हाइक चाहिए, आपको चाहिए 10 लाख से 20 लाख, उतना कोई भी नहीं देगा आपको, कितना भी आप लोगों ने अच्छा काम किया है ना प्रिय, दे वोंट गिव यू। सो बी रियलिस्टिक विथ योर अप्रोच, और ऐसा फिगर उनके पास डाल के इतनी खराब आप सेट मत कर लो इंप्रेशन दैट यू लूज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, कि उसको लगे यार ये तो क्या ही है, ये इतना पैसा मांग रहा है, इसको पता ही नहीं है कुछ, ना मार्केट का पता है ना इसको कुछ पता है, बस ही वांट्स मनी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो वो चीज आपको मेक श्योर करनी है दैट यू आर बीइंग रियलिस्टिक, राइट। then there's about ask for add-ons। कई बार ऐसा होगा नेगोशिएट में, whenever you are doing it, right, they will be telling you XYZ reason as in like इतना ही चल रहा है, इतना ही हो रहा है, you can always defend with the 3 USP, but समझो कुछ नहीं हो पा रहा है, right। तो what you'll do is you'll ask about अच्छा चलो I'll agree for whatever you said, right, but this is something which I want that आप मेरे को थोड़ा joining bonus दे दो चलो, या फिर मेरे को ESOPs दे दो vested in X years। आप पहले कभी मत बोलना ये, बिकॉज दिस इज वेरी टेम्पररी, राइट, और ये आपके सीटीसी में नहीं आएगा, तो जब भी आप नेक्स्ट स्विच लोगे ये चीजें काउंट नहीं होगी आपके से। बट अगर आपकी बात ही नहीं बन रही है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है, वो आपको जितना हाइक चाहिए उतना मिल ही नहीं रहा है, तो व्हाट यू कैन टर्न अराउंड इज यू कैन आस्क देम फॉर एड ऑन्स, कि अच्छा मेरे को ईसॉप दे दो आप, या आप मेरे को काम करो 1.5 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस दे दो, या आपका जॉब अभी बैंगलोर में है या आपका जॉब मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो आई वांट दैट आप मेरे को रीलोकेशन बोनस दे दो। ऐसा कुछ यू कैन आस्क फॉर एन एड ऑन जो आपको मिल सकता है वो थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए। एंड दे विल आस्क अबाउट एनी क्वेश्चन फॉर अस, राइट। सो अगेन वो पॉइंट इन टाइम पे यू हैव टू टेक इट स्मार्ट, दिस इज द फाइनल राउंड, सो यहाँ पे यू कांट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस और यू कांट
ask very basic questions, or you can't ask something जिससे उनको ऐसा लगे इनको तो कुछ पता ही नहीं है रोल के बारे में कि ये अभी ये चीज पूछ रहा है मेरे को. You have to be very categorical while answering those questions, right? So number one, company versus competitor. So always ask them this thing that sir, I have seen that आपका ये company ये innovation कर रहा है, but आपका competitor भी ये चीजें कर रहा है. So how are you planning to tackle that thing? So this is a very good question. इसका मतलब आपने industry analysis किया है और you have some good brains to ask the questions, right? So you can mention that company versus competitor wala part. This will always work, 110% work. Tried and tested in more than 10 interviews by myself, and it has worked, right? Industry insights. Ask them that अभी sir जैसे जैसे आप वो right? I'll tell you how it is. जैसे समझ लो आपको कोई कंपनी है, वो डोर टू डोर उसका होटल है, राइट? उसका होटल है और उसका होटल का 20% बिजनेस आता है होम डिलीवरी से, जिसके लिए उसकी खुद की होम डिलीवरी टीम है, ठीक है? सो यू कैन ऑलवेज आस्क अबाउट सर ये जोमेटो इतना बढ़ रहा है ना, तो हाउ आर यू प्लानिंग टू टैकल दैट थिंग, और मैम हाउ आर यू प्लानिंग टू टैकल ऑल दोस थिंग्स विद द शिफ्ट इन टाइम, राइट? सो वो आप इंडस्ट्री इनसाइट्स देके आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो. इट विल आल्सो शोकेस दैट यू आर वेरी गुड. यहाँ पे आप जाके रोल पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो कि सर मेरे को और रोल समझाओ, बिकॉज आपका फाइनल राउंड हो चुका है. He has already decided that whether you are selected or not, and now if he had decided that yeah you are selected, और अगर आपने बोल दिया कि सर ये रोल के बारे में क्या है, तो he'll be again like इसको तो वही नहीं पता है किसके लिए हायर हो रहा है, and he's asking that question again. So you can't ask that question, actually that's not practical. Or what you can say is just say no politely. How to say no politely? See, I've written it down, right? Mention that you had few questions earlier which were very much clear during the previous round. अभी किसी को तो पता नहीं है ना previous round में आपने कौन से question बोले हैं, क्या किसी ने बोला है. But you can always mention that मेरे को कुछ queries थी job role को लेके, industry को लेके, which I have asked in the previous round and it was taken care of. So as of now, I am good to go. Thank you for giving me the opportunity and move on. Don't ask anything. This is a very good and easy way to run off, okay? Because previous interviews जो भी रहेगा आपका previous वाला round, वो इतना record नहीं होगा ये extent तक. अगर होगा भी तो वो भी सुनेगा नहीं पूरा. So they might not be able to judge you whether you asked that question or not. But you can't say no questions. You can say that I had few questions already addressed हो गए previous round में. Now this is something where I don't have any questions, so it's fine. And that's it. Like, this is the interview which you will go through, and trust me, you'll be all good if you follow all these simple steps and you keep your presence of mind and all the things in mind, right? Now we'll jump on to post interview. Chandni, if you want to take this, you can take this, or if you want me to take, I'll take this ahead. Yeah, yeah. I'm fine now. I'll continue. Yeah, sure. Thank You can continue. Yeah. Thank you, Abhishek. Uh, so as we went through the process, right? Like pre-interview पूरा करे जो है, then we had post-interview, then we had during the interview, and now we have post-interview. So to know the results, to how to approach them, what to do exactly, that is what we look for over here. So first thing, you should always extend your appreciation. So irrespective of the results, like sometimes it would be they might I gotta accept you must be like picked up like or under resume accept I job interview clear karigada and you have an offer in your hand. So even if you're not taking it, appreciate, take it, say thank you, and give your valid reasons to them. And even if you're not selected as a proper candidate for that particular role, you still need to be kind and polite to them for the opportunity which they had given to you. So that is first, and that is I think so. It applies to every individual applying from the fresher to the any hierarchy we're applying. So that is one thing. Second thing, always ask for the next steps, right? Abhishek, I think Chandni's internet is gone. Yeah, no problem.
I'll take this. Is it though you get interview results, like are you selected, right? When you be expecting to come back? So that front. Chandni, you can actually shut your video off because there's an internet lag. We are not able to hear you. Yeah, please try now. Am I audible? Yeah, now we are audible. Thank you. So always ask for the next steps. When can you expect them? When can you expect a call? There's nothing wrong there. But what not to ask is never ask why you didn't get selected, right? Like maybe like you myself might have an urge to ask कि कड़ा खोटो आऊँ क्यों से के पैसे हैं कड़ा आऊँ like you know what I can work on the better front आऊँ किंग खोटो क्यों इटलेला करे मुके no need to ask such kind of a questions to them. So never ask them those questions. जॾहिं always ask for next steps करो था ना तो you be gentle on the follow up. जेको पाण पंहिंजे प्रोत्साहन 1 में भी पाण ॻाल्हि कयासीं, right? Like whenever you are approaching any HRs, you should be always be gentle there. And post knowing your results, if you are not selected or if there is any problem with their budgeting and everything, and they reject your profile, just ask like if you to be in touch and for the future opportunities. So you would like to work with them. It shows a very positive attitude on your front, and this it shows like how keen you are to work with them and make your future bright and to achieve your goals. It is one of the company which you're looking forward to work ever. So that is one. Moving on to the next screen. That is a post-interview thing. Summarizing. So summary is the entire thing which we went through it today, right? Right from pre-interview, पंखे pre-interview में कोरो preparations करेगी. So that would be a groundwork, right? कोर preparation करेगी है पंखे भणीने तो वने जो जाए what we are exactly to be asked over पंखे तो experience है उनके प्रमाणे पंखे जो questions अचींदा. You need to know that. You need to know about the interviewers. You need to know about the company which you are applying to. You need to know about the role you need to apply to. So that is the groundwork which we need to be very, very much clear. That is the basics which you out of expect करेंगे basics तो खबर होने ऐडे रहते हैं. Second thing is you need to nurture your personality, right? Learn, improve. So when you say learn, improve, that is a positive attitude. Even after getting rejected, or even like giving for the multiple, going for the multiple levels of rounds, and even applying it to multiple companies, it is always a positive to take. You always learn from whatever you have invested that time, right? So that will always help you to build up the personality and even take you to the greater heights. Third thing, be confident. Whether it's a preparation to your goal, what you want to achieve, that is your interview round, you want to clear, you want to be in that company, or being in that interview, right? Or even when you say you have given the interview, be confident. Never lose a hope and never demean yourself that something is wrong. You can always work for the better front, and that works. You can evaluate where I went wrong, but then be confident because once your evaluation is done, you know what exactly you need to do now or what you need to do it next, right? And once you are done with all this, you'll always excel. Whatever you do, so we need to be like taking it away. Like this is the like very, very key point. Which I think so. Panji, regular life maybe we adopt, right? Like groundwork is very much necessary. Nurture your personality and be confident. So that is how I summarize. And if we have any questions, we can take it up. Chandni, there's one question from Jay.
Yes. So he was asking how a fresher should answer the question to tell me about yourself. That's a very basic question. From I would like Abhishek also to add on it. But I'll say it's a general question which you are asked wherever in the initial rounds. It's about yourself. Is that is where we said like the hero in you. What exactly is you? What you have done, and what's your background? So your it's only about yourself and how you have progressed that you can add it to yourself. I would like Abhishek also to add it to it. Correct. Yeah. Agreed on that part, Chandni. So just wanted to add on that part that remember in the first webinar, right? हम लोगों ने बात किया था कि कैसे आप अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करोगे, राइट? उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी फॉर फ्रेशर, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन ज़्यादा की, राइट? कुछ भी सर्टिफिकेशन आप कर लो वो पॉइंट इन टाइम पे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद योर नेम, where you belong to, आपका degree. Then you can mention something about college fest which you like organized or which you were part of. You can also mention about few projects you were part of, and then you can mention that in that part second year में मैंने ये चीज़ करी तो मेरे को ये पता चला डिजिटल मार्केटिंग बहुत बूस्ट है, so मैंने एक कोर्स करा, फिर वहाँ से मैं थोड़ा ये बहुत सीखा, तो मेरे को अच्छा लगा काफ़ी, so it opened a learning door for me, and that's why like I think that प्रोफेशनल लाइफ में भी लर्निंग्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एज आई एम शिफ्टिंग इनटू अ प्रोफेशनल लाइफ, राइट, then again like I'll be having all those things on road so that whenever I enter it I have that proper sort of understanding of the market and everything. So again, you can mention on that part about the, so three important part. Number one, like about whatever projects or whatever like key things which you did it in your sort of graduation program about certifications and all. Number second is little bit about where you belong to and where is your hometown and little bit about your schooling. And the third part is about what you learned from the college and how it's going on for you and what are you expecting out of professional life. You can also mention that this is the first step as my professional life, so I'm a bit excited, a little nervous, but I understand the profile this way, so I'm really excited to move into a professional life journey which I'm going on. So you can mention all those things over and above that. Okay, so there are more questions. पर मड़े के रिक्वेस्ट करिए कि मड़े या वीडियो ऑन करिए. So we are towards the last part of the main session અને કોઈ પણ mock interviews પણ શરૂ કરીબો. So if you guys can please, I'll just Abhishek, you can stop sharing the screen and let's have everybody on the screen now. અને જેટલા જણા YouTube पे भी नहीं रहता, मड़े के रिक्वेस्ट है कि you guys can join the Zoom now, all the YouTube people, and हेते अची वनो અને पा mock पा ये शुरू करींदो. અને definitely, first of all, thank you so much Abhishek and Chandni for taking up this like very less talked about subject. Basically interview करी ते prepare करे जो generally माके कहते कि regular एडिते crash course कहते मिले ना कि these are the tips, ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका तुम क्या आंसर करोगे वगैरह वगैरह, राइट. सो दिस इज वेरी यूनिक सेशन અને એ YouTube पे हुंदो लाइव, प्लस विल टेक अप डेफिनेटली some questions now. અને આમ મળે કે રિક્વેસ્ટ है people on YouTube as well as here on Zoom will start the mock interviews, and let's make this event a very good successful event wherein you all get chance to interview and you get a feedback and કોઈ પણ જો feedback form પણ બનો. The chat box there Komal has already shared a feedback, so if you see docs.google.com, that is the link of a feedback form. मेरे की request है कि feedback form भरे અને सब जगह पे 5 star डालने का जरूरत नहीं है. If you think this was 1 star, put a 1 star. तो हम लोग फिर उसको improve करेंगे. If you want to put a 1 star, put 1 star. But definitely put a 5 star if you really love some of the beautiful concepts shared in the presentation. I have also personally learned many good things. So that's a reminder for all. So let's just copy paste that into the box again. This is the link. Fill it up. So we'll take up the questions. So जो कोई एक question आया हुआ है, let's see. Mentioned in the last slide,
विवेक मंगे पूछे था, विवेक वीडियो चालू करियो, कम ऑन लेट्स, एंड मेरे के रिक्वेस्ट है, लेट्स टर्न ऑन द वीडियो पाके ना, वी नीड टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव. विवेक ने ऐसा पूछा है, as mentioned in the last slide, we should not ask them why did we not get selected. Then how can we get a feedback if what went wrong? How do I know? So Abhishek क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? Correct. So that's a very valid point, Vivek. But the thing is, see, this is something which we are doing it as a part of a community, right? Where we'll be giving you a feedback and all. But लोगों के पास जनरली इतना टाइम नहीं होता है एचआर एंड टू, बिकॉज वो लोग 100 प्रोफाइल स्क्रीन करते हैं, 50 का इंटरव्यू लेते हैं, 5 को सिलेक्ट करते हैं, राइट? So again, this is something where you might not be getting that personalized sort of an feedback, right, from the person. But that's a very good question, that if you are not able to get feedback, how will we know that what went wrong, right? And how should we improve it, right? So that's where, अगर आपने prep के point in time पे जब आपने slide देखा होगा prep का, when we are talking about prep, right, I mentioned about one point that जब भी आप prep कर रहे हो, after every failed interview, right, you will be able to improve yourself by 5%. Ultimately, 110% at one point in time, you will be confident even to, because the interview is something which is a game of gamble, right? And it will completely depend upon someone who is on the other end. मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल चीज. एक आपका फ्रेंड है who is very aggressive, एक आप हो who is very polite and gentle, right? And the role demands polite and gentleness, okay? But the thing is, जो इंटरव्यू ले रहा है, right, वो बंदा ही, right, he will actually select him and your friend and not you, because हमेशा जो भी इंटरव्यू बंदा लेता है, right, वो अपने आप को ही ढूंढता है कैंडिडेट्स में. So it will again depends upon how and when you are doing it, but that doesn't mean you are doing anything wrong. So never consider that you are wrong और आपका skill set कहीं पे जा रहा है. It is mainly because of the interpersonal skill और सामने वाले का part where you are not able to like sort of get it. But when you will introspect it within, and when you will work on your next interview for your prep part, you'll 110% be able to improve it from your previous thing. And believe it or not, within 1 or 2 interviews, you'll be good to go, and then you'll be seeing results. You'll be able to improve that. But for that, you have to introspect in yourself more than the feedback. Absolutely. I think I had that same thing in my mind. which Abhishek ने बोल दिया. तो अभिषेक का जितना भी ये pointers है ना, like very much appropriate, very much like 100% correct answers आ रहा है. किसी के पास समय नहीं रहेगा कि हर एक जन को फीडबैक दे कि भाई तुम्हारा क्या गलत गया. द बेस्ट थिंग इज खुद को रियलाइज करना है कि मेरा इंटरव्यू में कैसा था, सामने वाला कैसा रिस्पॉन्ड किया. हमारा वो क्या बोलते हैं, मैच मेकिंग होता है ना, तो कैसा मैच मेकिंग हुआ, मजा आया इंटरव्यू में, वाइब पॉजिटिव था नेगेटिव था, उससे पता चल जाएगा. और दूसरा चीज ऐसा है कि यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे और मैंने इसका ये आंसर दिया. तो अभिषेक जैसा कोई आपका फ्रेंड रहेगा, इज लाइक आपको तुरंत आंसर दे देगा, ये तूने इधर गड़बड़ किया. तो दैट इज आई थिंक द बेटर वे टू लुक एट इट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि वो एक ओपनिंग के लिए 10 जन का इंटरव्यू कर रहे हैं और ऑलरेडी इनके पास दूसरे जन हैं और उन्होंने अपना इंटरव्यू ऐसे ही कर दिया कि चलो एक और देखते हैं कि कोई अच्छा ऐसा आया. तो खुद के स्किल्स पे डाउट कभी नहीं करेंगे. विल से कि ठीक है, दिस वाज नॉट द राइट फिट फॉर मी, और उस तरह से आई थिंक मूव ऑन कर देंगे. बट interview after interview we have to improve. Correct. Next, I'm working in one MNC. I'd just like to highlight this thing that I got rejected in the Google interview, right? और मेरे को बताया नहीं उन्होंने फाइनल राउंड में. They just told that आप में googliness नहीं है and we are not hiring you, right? So they didn't tell me what went wrong, and और next day मेरा Salesforce का interview क्रैक हुआ. Next day, very next day, Thursday को मेरा Google का 3 back to back राउंड था. I already cleared 2 राउंड पहले. 3 बैक टू बैक राउंड में सेकंड राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड. सो टोटल आई क्लियर्ड 4 राउंड्स 5 में से. बट व्हेन आई आस्क्ड, लाइक, क्योंकि एचआर को भी मैं पूछता नहीं हूँ कभी, बिकॉज दैट्स व्हाट आई प्रीच, राइट, दैट वन शुड नेवर आस्क. बट द थिंग वाज, एचआर मेरी कॉलेज की पास आउट थी गूगल की. शी वाज 2016 पास आउट फ्रॉम आईएमटी गाजियाबाद. तो मेरा ऑलरेडी कनेक्ट बैठ गया था कि सेम कॉलेज से है. तो मैंने पहले से उसको थोड़ा अच्छे से मैंने बात किया था, थोड़ा उससे समझा भी था, उसने अच्छा इनसाइट भी मेरे को दिया था. एंड दैट्स आई डिड इट हाउ, बिकॉज आई डिड माई रिसर्च वेल. जब एचआर को मेरा कॉल आया, मैंने लिंक्डइन पे लिखा, लिंक्डइन पे उसका नाम दिखा, एंड व्हेन आई सॉ कॉलेज आई वाज लाइक डैम, दिस इज रियली गुड बिकॉज शी इज फ्रॉम द सेम कॉलेज. और जब मैंने उसको ये चीज बोला, शी इज लाइक, अभिषेक हम लोग नहीं बताते, मतलब मेरे को पता होता तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता देती, बट दिस इज समथिंग दैट
गूगल के लोग नहीं बताते कि व्हाई यू गॉट रिजेक्टेड, दे जस्ट से दैट ही इज मिसिंग गूगलीनेस, दैट्स इट। तो नहीं मिलता है आंसर, बट आई इंट्रोस्पेक्टेड दैट डे। मैंने मेरे जैसे कैलाश भाई ने बोला, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला, मेरे बिलीव मी और नॉट मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोला तेरे आंसर सब परफेक्ट थे, बट स्टिल यू गॉट रिजेक्टेड, राइट? बट दैट डजंट मीन आई हैव टू सेल्फ डाउट, आई इंप्रूव। मैंने सोचा कौन से एरियाज में आई वुड हैव आंसर्ड इट बेटर। नेक्स्ट डे मेरा सेल्सफोर्स का इंटरव्यू था एंड आई क्लियर्ड दैट इंटरव्यू एंड आई एम राइट नाउ वर्किंग इन सेल्सफोर्स। सो यू कैन इमेजिन दैट सिचुएशन, राइट? या और सामने वाला उसको मॉर्निंग में चाय मिला या नहीं मिला उस पर भी डिपेंड होता है कि तुमको सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा, राइट? एंड दैट्स अ रियल थिंग। उसका मूड अच्छा रहेगा, यू नो, सो देन सो इट्स एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वन, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। अगर उसका मूड अच्छा नहीं और आपके इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन आंसर में आपने मस्त एकदम मजा करा दिया उसको, दैट कैन बी, यू नो, अ पॉजिटिव थिंग, यू नो। सो इट इज अ सिचुएशनल बेसिकली, एंड इन एवरी सिचुएशन वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट कि भाई मेरा बेस्ट कैसे डालूं, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड देन मूव ऑन। तो या दैट्स, और ज्यादा इसमें फिर रिसर्च नहीं करेंगे क्यों मुझे रिजेक्ट किया, यू नो। आई एम वर्किंग विद वन एमएनसी। हर्ष का क्वेश्चन है, हर्ष गोरी, in IT industry and my first company I want to switch, but it is fine if I go with some startups, will it have any impact? तो हर्ष है क्या अभी? हर्ष गोरी है। हर्ष वीडियो ऑन कर बा, वीडियो ऑन करो और you know, yeah, I'll quickly reply to that कि yes, it is definitely okay to switch, और स्टार्टअप को भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटी, दिस इज योर फर्स्ट कंपनी, दैट मीन्स तुम शायद फ्रेशर हो या यू नो समथिंग लाइक दैट। रिकमेंडेशन मेरा किस तरह से रहता है जनरली, if your current company is doing good, if your profile is good enough, ठीक है, सैलरी थोड़ा बहुत आगे पीछे है, समझो अगर आपको लगता है कि मैं स्विच करूंगा तो मुझे और थोड़ा 5-10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट, बट मेक श्योर आप करंट कंपनी में एटलीस्ट 2 years स्पेंड करो बेसिकली। It's already done. So It's already done? Yeah, it's I'm in like Cognizant, okay, and Yeah. it's like more than 2 years now. And actually, I wanted to switch, and I was just talking to my colleagues. So I was just checking with them that where should I exactly apply, because from college, it was quite easy that we used to get the placements directly in college. But now it's the case that I have to apply separately, not from the college set, okay. And they used to tell me that since you are already in a good company from the beginning, so they suggested me actually that you should try to get some better MNC from Cognizant, something better than this. But I was a bit confused, like, shall I opt for some startups? Because there is a case that startups do provide some good salaries, better than MNCs, and maybe also they'll provide some better roles than them. But I'm not sure if that can impact my career, like from MNC to some random startup, and there can be some job risk as well. So I had this question. So basically, you know, the answer is very simple. स्टार्टअप्स को इवेल्युएट करना है, स्टार्टअप्स आर रियली गुड, आपको अच्छे स्टार्टअप्स मिले, वर्क प्रोफाइल अच्छा रहे, तो यू कैन डेफिनेटली स्विच। there is nothing like MNC to better MNC, there is no better, it's not like it is what work you do, and because of what your work कंपनी को क्या इम्पैक्ट कर रहा है। समझो आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया या फ्रंट एंड कुछ बनाया कि जो कंपनी का मेन लैंडिंग पेज है उस पर बहुत सारा चीज होगा और उसका सक्सेस आपके सक्सेस को डिफाइन करेगा, यू नो। सो गो सर्च फॉर अ राइट प्रोफाइल इनटू अ स्टार्टअप, एंड स्टार्टअप का पेमेंट्स भी यू नो दे आर यू नो इक्वल लाइक एमएनसीज, यू नो, ऐसा नहीं है बस खाली आपको एक्स्ट्रा पर्क्स नहीं मिलेंगे कि यू नो रेफ्रिजरेटर नहीं रहेगा, लंच नहीं मिलेगा फ्री, दो मॉनिटर में नहीं मिलेंगे, यू नो, एंड ऑल दैट, ये सब नहीं मिलेगा, बट बाकी सारा जो चाहिए। सो आई थिंक अर्ली इन योर करियर राइट नाउ 2 year in Cognizant, I'll highly recommend that MNCs and all that, they are, you know, you should look for your work profile, what team I'm working on, what is my job role, what is my pay, and मुझे क्या काम करने को मिलेगा। if you're just writing a spreadsheet or word document and doing nothing, then वो Google भी रहेगा, Facebook भी रहेगा, I will just reject that job. Rather, I will focus on startup who are actually solving real life problems and they have actually good customer base. वो online search करोगे तो you'll get all this data. So I think for you definitely startups are going to be a good switch. Early on आपको 4-5 साल में, मतलब 2 years हो गया, और 2 years में आपका technical और थोड़ा strong हो जाना चाहिए, where you get really good knowledge basically. That's where you will then वापस तुम TCS में अप्लाई करो, you know, आपका इससे आपको बहुत ही अच्छा जॉब मिलेगा after that. So it is that kind of thing. Yeah.
Hi Kailash, if you don't mind, if you can add little bit more on, I can help Harsh out, Harsh, on this particular area. So Harsh, I would definitely suggest, yeah, I am walking into this particular tech area as an HR since last 2 years. So I have all the clients, MNC, startups and all. So startup is something, you can definitely opt for, reason being, there are many product based startups like fintechs who are doing great than MNCs. Okay, so you once enter into the startup as a developer, as an engineer, you will get a better idea the roles and responsibilities. So if you are somebody who want to actually work more, you want to explore more with reference to your tech skills, so startups are the best place, because you will not find 10 to 15 tech guys working on one particular project, which is usually done in MNCs. So here in startup, you will get that authority or a power to implement your skill set, your whatever your expertise is. So I think you should definitely see for many product based startups which are doing great in the market right now. Yeah, that's all. Sure, sure. Thank you. Wonderful. Super. Yeah, some more questions before we start the breakout room. मैंने क्या question पूछे जाएं so that it becomes much easier. I see like many of you all from the beginning you guys have you are here, so you guys are all serious about your career and interview cracking and everything. So definitely shoot your questions. This is the right time. And hope you have filled up the form, Google form for the feedback. Okay. If you have any more questions, I think the main session will stay as it is. So I'll try to stay in the main session. If you have any questions, you can ask. So I request Chandni to introduce our HR team first, and request Satish bhai after that to create the breakout rooms. So breakout room वालों simple है. ये Zoom session बंदे चालू है. We will create a breakout room, 3 to 4 breakout rooms that we will create. અને breakout room में जो भी HR panel members पास आते हैं उन्हीं जा नाला होता, and basically you will be assigned to one of the HR session. You go inside that room, मतलब you will be assigned, so you will go to a breakout room. आके एक message अचिंदो कि you are switching to breakout room in Zoom basically. So उनमें एकड़ा panel होता HR, and basically they already have your resume because I'm a resume upload kya hai and they will interview you 10 minutes, 15 minutes, whatever, and they will give you feedback after that. Kya interview karo. So somebody asked कि भाई मेरा इंटरव्यू कैसा था, कैसे पता चले, तो अभी हम लोग तो आप भी प्रोवाइड कर देंगे कि भाई कैसा था आपका इंटरव्यू. So that is how we are going to work on. जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है, you can come back to the main session and somebody else will join that HR person. And so this is going to be a private interview. Yeah, Jeet, you have some questions? मैंने और है रिज्यूम नहीं लायो से Resume? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं गए फर्स्ट अटेम्प्ट पांचो लाइन ना फर्स्ट ना ना पायो अटेंड नहीं गयो ने मुझे बी कालने साल दिया उन्हें एब्सेंट हो थाने मुझे जी है वर्किंग ने कम किया और मुंडा पोर्ट में तो जी देनो वो या के हलाई नहीं हाँ हल्लाई दियो અને વિધાઉટ રેઝ્યુમે ઓલસો કોઈ એડો હોય તો વાસ ઇન્ટરવ્યુ દેજો. ઓકે हाँ ठीक है. Yes. Thank you. Very good. Yeah. BKK कोई question? Yeah, Chandni, over to you. Introduce. Chandni? Yes, Kailash. If you can introduce our HR panel members. Yes, so we have basically we have external HRs on a panel today, and Anvisha was yet to join. So currently we have 2 external HRs and 2 internal HRs with us. One is Shweta Vanushali Panja Jain, and she'll be helping us to conduct this mock interviews. And the second person we have is Neha. She is also an HR. Like Shweta is a quite. Shweta has around 2 years of experience, and she's currently working with the consulting
firm and a company, and with Sneha is working with a company, and she has around 18 years of experience. So these are the two external HRs, and the two internal HRs which we have on board is Mr. Abhishek Kahulpada, जो को पंजा speaker in, and Kailash Bhai would be also conducting the interviews. So yeah, these are the four people we have it on board. Yeah. So welcome you all. I think you all have joined, and Anvisha hasn't joined. So Anvisha is also one of the HRs. She has around 4 to 5 years of experience. One of the she's working with one of the very prestigious company, and she has a very good experience, and she will be also adding a value to this. And we welcome Anvisha. But yeah, so we will start our mock interviews in a while. We'll wait for one of the HR members to join, and then yeah, so that's it. Okay, so I request Satish Bhai to create 4 plus 2, 6 rooms, 6 breakout rooms, and I've renamed everybody as HR right now. So you can see whoever is HR hyphen can add to that room, and yeah. Okay, welcome. Anvesha has also joined. Hi, I am extremely sorry. No worries, Anvesha. Can you hear me? I think Anvesha jo. Yes. Yeah. Okay. Great. So आके मैंने क्या update दिया पूरा चालू हुआ है okay. So Shweta Kataria, she is assigned to HR Shweta. Sneha is also assigned to HR Sneha. Anvesha. Okay. So we have all the groups created. Satish Bhai, can you unmute and just assign team members? Yeah, so I created a breakout room. Hope you are able to see that. Yeah. Now we need to shift each student to each breakout room. Okay, so I'm doing that. Just give me 1 second. Yeah. अभिषेक क्या कह रहा है? अभिषेक यहाँ पे है ना? हाँ मैं इधर ही हूँ। सतीश भाई को है ना कौन से स्टूडेंट को कौन से एचआर के साथ भेजना है? हाँ और मैंने भेज दिया था चांदनी को, सागर को, सो उन्होंने फॉरवर्ड किया होगा सतीश भाई को। सतीश भाई आपको मिला है? हाँ, I have a file. Just I'm cross verifying with this. The person is available or not. So many are not there. So आप just जो अभी अवेलेबल है ना 21 प्लस है, so उनको आप असाइन दर्शन माओ. I am assigning all this to 111. Yeah, please. जिसके अगेंस्ट जो है ना उनको ही करना. Okay, so assignment have started. So first breakout. तो कैरल भाई जो मेरे को फ्रेश रेज्यूमे आए ना, so I am assigning them to few of the HRs and putting them into slot. Yeah, please. Yeah. उनको सबको भेज दो चलेगा. Correct, yeah, I'll do that. Hello, this look difficult for about. So what I'm doing मैं first on first basis पे assign करते जा रहा हूँ. क्योंकि वो उनके पास उनका रेज्यूमे शायद नहीं रहेगा ना, that's why. हाँ, so this is Sneha. Just give me 5 minutes. Just a second. अभिषेक आप मुझे भी भेज दो सारा. हाँ जी कैलाश भाई. किसके अगेंस्ट कौन सा है ना वो एक्सेल शीट मुझे भेज दो सिंपल. हाँ मैं भेज देता हूँ. So if you have Excel, then send to me.
So सतीश भाई आपको भी भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, अपना कोर ग्रुप में ही है। Let's see. जय जय Okay. So Vivek Mange, you are assigned to Shweta. और श्वेता पे ऑलरेडी आपने असाइन कर दिया है। हाँ, एक काम करते हैं, लेट्स असाइन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड विवेक अपना अभिषेक यू शेयर देयर रेज्यूमे, ओके, विद रिस्पेक्टिव एचआर। या आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी। ठीक है। सो जो मैंने वो भेजा है ना, उनके सारे रिज्यूमे सबके पास है। नहीं, अभी कैसा है उसमें ढूंढ के, जैसे श्वेता के सामने ऑलरेडी असाइन है ना, तो सतीश भाई आप असाइन कर रहे हैं? हाँ, मैं असाइन करते जा रहा हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, एक एक पर्सन। क्योंकि अभी तक एक ही रूम बनाया है, बाकी सब बाकी। ठीक है, तो Abhishek, are you also able to see breakout room C in the corner right? Yeah, I am able to see Anvesha has 2 people now. Sneha has 2. Two मतलब वो दोनों हैं, Anvesha herself and then like that. So Abhishek has gone. So Gautam, Abhishek, you have to join the breakout room now. ठीक है, आप वो join कर लो. So I'll be here with the other members meanwhile. ठीक है, all the rooms are. And Satish bhai, you are here? Yeah, I'm here, hello. Okay. So सतीश भाई, अन्वेषा के पास हंसा भानुशाली असाइन है, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज असाइन समबडी एल्स। Okay, I'm just moving out to main. She has also not joined. Jill has not joined. Jill, you have to join the breakout room. Jill, you are in main session. Okay, wonderful. Everybody is set, correct. Okay, so meanwhile ये breakout rooms चालू है. I am available here for any questions. Jeet said I can't find my resume. अच्छा, उनका हो गया. Okay. So बाकी मिनट की मुझे आवाज अच्छे, तो विवेक मंगे, जीत, विवेक मंगे 2 है, श्वेता एंड त्रिशा एंड जय. Can you confirm if you can hear me? Yes, आवाज अच्छे तो आया. Yes, you audible. So just 1 second.
All right. So hete just meanwhile start કર્યું. Meanwhile breakout rooms free થઈએ. Can we have a like live interview? Anyone wants to try? કોઈ પણ unmute કરે કે I want to try. Now એકદમ basic question પૂછું. And you try answering it. Share કરી દો. Jay Mange, you want to try? Okay, fine. Okay. चलो तो वीडियो અહીં on કરી શકો if you can. You cannot start your video because the host has disabled it. Pop-up or something. अच्छा really? Okay, one second. Ask to start video. ऐसा तो किया नहीं है, but किया. Okay. Yes. Am I audible and visible? Yes. I hope it's clear. Network issue, mobile data. हाँ, थोड़ा इश्यू लग रहा है, लैग हो रहा है, but mobile data. Okay, so वीडियो बंद कर सकते हैं, that's fine, है ना? It's okay. Okay. Okay, so जय एक quick start करते हैं. I think tell me about your profile. So I am Jay Bhanushari, Jay Mange. I am doing engineering from DJ Sangvi College. I am in second year. I am from data science branch. From beginning, from grade 8, I was introduced to coding, and I basically like coding and doing tech stuff. So this drove my interest towards engineering and basically coding. Talking about my skills, I'm pretty proficient with Python, and I have also learned web development like basic HTML, CSS, and JavaScript. Wonderful. So और हम लोग यहाँ पे कॉमन रूम में एकदम सिंपल ये करेंगे. So my next question to you, Jay, is like, let's say you have come to a company for a internship, okay? Because you're still in second year, third year में internship के लिए आए. So I'm gonna ask you, do you have any experience in any of the coding language where you have built end-to-end project? No, I haven't built any end-to-end projects yet, but I'm working on one project. It's a utility project. Okay, tell me more about it. If you have seen websites where we can do utility tasks like merging PDFs or editing images, stuff like that. So it's a utility project, and some unique features about it is we can have study groups associated with it. Like you can share notes or you can share in-app code, and you can run code in that in that website as well. So along with utility, we have merged the features of study group. All right. So ultimately, what you want to become, Jay, after you graduate? After I graduate, my aim was to become a data scientist or machine learning engineer, because this is the booming career right now. Machine learning and data science is the future. So I have thought of becoming a data scientist. अच्छा. And 10 साल के बाद में, where do you see yourself? What will you be doing 10 years from now? 10 years down the line, I do not have much clarity about it, but once I gain a lot of industry experience, I would definitely have some problem in my head that I want to solve using machine learning or using artificial intelligence. So Jay, आपके strength क्या हैं? What are your biggest strengths? Talking about my strengths, only 3. I am a creative person. Like I like to think out of the box or something that no one else thinks. Second strength is I am a slow learner, but once I learn something, I learn it thoroughly. And third strength is I am adaptive. Like I can quickly adapt to things. I can adapt to changes. Okay. And what are your 3 weaknesses? Weaknesses, there are a lot of moments when I feel like giving up, and at times I require a lot of motivation to overcome obstacles in whatever things I'm doing. That is my weakness, but I'm working on that. Okay.
I cannot recollect about any other weakness at this moment. Okay, only one weakness. Okay, that's great. And what are you doing to overcome that weakness? Like I have to keep myself. I have to keep trying again and again. My weakness is like I stop doing. For example, if I'm working on project and I'm not able to do some task, so it is not good if you leave that project in between. You have to try again and again. So I'm trying to motivate myself to be persistent in that. Okay, yeah, that's good. So finally, Jay, tell me, so far, what do you think this one is one of your biggest achievement in your life so far, and why do you consider that as your biggest achievement? Give me one thing. Like Sorry, can you something. repeat? Yeah, so the question is, tell me one of your biggest achievement, like something you have done really well, or you can say like, this was the problem and you solved it very powerfully, and you solved it really good, basically. What is that one thing that you can share? Biggest challenge in your life that you actually problem in your life that you have solved it. That means that's your achievement. At this point of time, I can't recollect any such event or any such problem in my life that I have solved. But talking in terms of achievements, yes, cracking the entrance exam was an achievement for me at this point of time in my life at least. ओके ओके ग्रेट, ठीक है, यहाँ पे पॉज करते हैं, थोड़ा हटके और करते हैं. कैन वी हैव वन मोर वॉलंटियर? आपका प्रॉपर एचआर राउंड वापस होगा अंदर ब्रेकआउट रूम में. डू वी हैव समवन एल्स? Who else is there? Vivek? Before you continue with someone else, I wanted to ask where to upload the resume because I have not uploaded it before. See, the thing is, resume was supposed to be uploaded in the form that you have registered, but since you haven't done that, I think you can just tell the HR that I haven't uploaded. Then she will ask you general question in that case, because it was only through website actually. Oh, okay. ठीक है. Do we have any more volunteers? Riddhi, Satish, Krishna, Vivek, Shweta ji. सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे. मुझे बोलना होगा. श्वेता, यू वांट टू ट्राई? You are on mute, Shweta. Yes. श्वेता ये करो करे था जस्ट क्विक प्रोफाइल अगर चाहता था. I actually BE करे करो है complete ने which में 2-3 years जो break करो वो because actually which में मुझे विया भी थई विया so हम हाणे ME में admission गिने वारी हैं जी. गेट जो स्कोर इतलो सारो ना आयो due to some obviously विया थई मैंने पुठिया थोड़ो भणे जो ने वधारे न थिया but तो भी एटलीस्ट मुझो ME में एडमिशन थई वेंदो ने मूंखे अॻियां AIML में करणो आहे. जो बी में मुझो प्रोजेक्ट भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो बेस्ड ऑन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम. तो उनमें भी आऊं पिंडई थी मुझो प्रोग्रामिंग पूरो पिंडई आज कियो है यूजिंग आर्डिनो एंड सी प्रोग्रामिंग कियो वो बेसिक बट पे हाणे उनके अपग्रेड करने आऊं पाइथन भी सिखियो है. मुंहिंजा IIT बॉम्बे में वर्कशॉप्स भी कई बोतरे बेस्ड ऑन दैट. AI जो भी वर्कशॉप्स कई VJTI थ्रू. सो मूंखे एक्चुअली 7th सेम में AI जॾहिं इंट्रोड्यूस थियो न तॾहिं मूंखे एकदम इंटरेस्ट आयो कि AI में मतलब मूंखे
हेडी तो लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स बी इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों है बट एटलो कोई सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हेडी ते ना वो की मुके इंटरेस्ट अच्छा तो या अॻियां वञी की करे सकां थी पर जॾहिं एआई इंट्रोड्यूस थियो ने एआई गेड़ो ने वर्कशॉप्स कया मुंहिंजो कोडिंग एकदम सारो થઈ वियो अंडरस्टैंडिंग लेवल त पे मूंखे अहिड़ी त लॻो की ना एआई ने एमएल में एकदम सारी रीति की करे सकां थी अदर देन हार्डवेयर में अंडरस्टूड त पे हाणे एमई करे ने पोइ या त टीचिंग में वेंदी या तो पहला जॉब अपॉर्चुनिटीज न वेंदी great yeah so for electronics people it is better that you opt for like let's see how do we put it maybe well settled good company कि जो लोग को आके ट्रेनिंग दे सके so if you join a startup they will not provide you detailed training because now you have some basics of everything as electronics engineer you not have done much of a coding in detail Arduino उसमें machine level किया रहेगा या C किया रहेगा या C++ Max या Max Java but that too like core not the advanced version so directly कोई startup के they will not get any benefit from your experience Yes. okay? So MNC जैसे TCS Cognizant ये जो भी है right Infosys हो गया या फिर कोई product company भी हो गया ये सब services हो गया so they can probably definitely hire you as an individual because you have done BE and you have such and such knowledge and then you gain some programming experience in that 2-year job right and साथ में I don't know if ME can be done like working with some company part time जैसा अगर हो सकता है तो you can probably even do that and gain some programming so I think if you want to go deeper into AI machine learning then you have to have some basics programming right Python कर लिया या जावा कर लिया C++ डिटेल में कर लिया या तो जो क्लाउड सर्विसेज है जैसे Amazon के जो अलग अलग सर्विसेज है AWS के बेसिकली तो वहां पे आपने कुछ कर लिया या तो और उसका साइड में आप कोर्स शुरू कर सकते हो जैसे कि कोर्सेरा हो गया एडिलिक्स हो गया ऑलरेडी कोर्स एमएल का किया है स्टार्ट मेरा अभी उसमें प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स चालू है कोर्सेरा पे किया है एंड एमएल एआई फिर इवन पाइथन भी उसके बाद आई विल डू इट so that I'll gain experience and I'll do programming and even कॉलेज के थ्रू मेरे को बहुत हेल्प मिल रहा है वॉज इन विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो वहां से मेरे प्रोफेसर्स ने मेरे को एक प्रोजेक्ट असाइन किया है ताकि इवन जर्नल में मेरा पेपर सिलेक्ट हो सके सो इवन इन दैट प्रोजेक्ट आई हैव न्यूरल नेटवर्क्स पार्ट सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट इवन सो दैट एटलीस्ट मेरा रेज्यूमे में भी हेल्प हो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाए और साथ साथ में आपको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी होना चाहिए सो अलोंग विद ऑल द थियोरेटिकल थिंग्स एंड पेपर्स एंड ऑल राइट प्रैक्टिकल जैसे आपने आर्डिनो बताया राइट सो आई विल टेल यू अ सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक कम अप विद सो हैव यू स्टडीड ब्लूटूथ फॉर एग्जांपल not in detail I had in syllabus only actually I had used Arduino just like to take the input from sensors we had used Arduino 256 because we had battery management system project so we just use current sensor and voltage divider types yeah so what I'd recommend if you just maybe if you like it then you can go with that route since you have some time basically so either you will be prepping for interviews or you will be also preparing for MEs depending on the best situation you will take the one of this route so what you do is pick up one project and complete it to the complete it to the level in which it is actually a usable prototype basically और वो फिर हर जगह पे चाहे वो एमई का प्रोजेक्ट हो चाहे फ्यूचर रिसर्च पेपर हो या जॉब इंटरव्यू हो सब जगह पे उसको बताने का बेसिकली वो देखो मैंने ये प्रोजेक्ट किया है एंड इट शुड बी अ यूजेबल थिंग कि कोई स्टार्टअप को दे दिया कि देखो ये तुमको काम आता है क्या व्हाटएवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू वांट टू सॉल्व तो ब्लूटूथ का मैंने इसके लिए बताया क्योंकि आर्डिनो बेस्ड आप आई बीकन्स बेस्ड कुछ डिवाइस बना सकते हो कि जैसे कि ब्लूटूथ के बीकन्स के छोटे छोटे चिप्स आते हैं basically that you can put in the
hall, for example, or something like that, next to every device, right? Or Okay. एक Arduino based आपका एक controller रहेगा that is actually collecting the data, और मोबाइल फोन से you develop a simple Android app, very simple Java में एक Android app बनाया जहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मेरे आई बीकन्स हैं, और मैं जहाँ भी बाजू में जा रहा हूँ तो विच वन इज माय क्लोजेस्ट आई बीकन बेसिकली। ऐसा वाला सिंपल ऐप बना दिया। तो यूजिंग हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, वैसा मैं बता रहा हूँ, ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस योर एआई थिंग या आगे जाके आपका प्रोग्रामिंग थिंग गेट्स अ रियली गुड स्टोरी। तो ये कहाँ पे यूज कर सकते हो? देखिए से कि लेट्स से कि कोई कार का शोरूम है और कार के शोरूम में 10 कार खड़ी है एंड सेल्स पीपल दे आर सेलिंग कार, राइट? कस्टमर आया और वो अभी लेट्स से कि कोई एक कार के पास खड़ा है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। तो हर एक सेल्स पर्सन जब एंटर करता है ना तो कस्टमर को चिप दे देगा एक विजिटिंग कार्ड जैसा ही उसमें, एंड दीज पीपल आर टॉकिंग। तो वो कस्टमर ने कौन सी कार के बाजू में ज्यादा टाइम खड़ा रहा, सेल्स पर्सन के बाजू में कितने टाइम खड़ा रहा, कौन सी कार में ज्यादा टाइम स्पेंड किया, कम टाइम पे, उसका एंट्री एग्जिट, तो ये सारा डेटा कलेक्ट होते जा रहा है आपका, और यू आर एबल टू प्रिपेयर दैट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे टू द शोरूम ओनर कि तुम्हारा टोटल विजिटर्स इतना था, इतना एंट्री आया, ये कार ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जन खड़े रह रहे हैं, समथिंग लाइक वेर यू नीड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बो। ऐसा सिंपल प्रोजेक्ट बनाना, इट इज हार्डली, इट विल टेक अ मंथ टाइम, Yes. दैट्स माय काइंड ऑफ एडवाइस कि कम अप विद अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो आपके पास डेमोन्स्ट्रेटेबल वो हो, वैसा, है ना? Yes. ठीक है, Thank you so much. ऑलराइट। सो आई थिंक एक रूम खाली हुआ है स्नेहा का, तो सतीश भाई कैन असाइन somebody from the current। सतीश भाई? Yeah, just 1 second. Yes. Okay. So you're being assigned to one HR panel member. Next, let's see who is there. Riddhi, you want to share your profile? Yes, sir. Riddhi, यहाँ जो introduction दो, just a common, we are just chit chatting, trying to understand where we can be helpful. मुझे नाम रिद्धि गजरा है, હું યાર બીકોમ કમ્પ્લીટ કરી આ શિપિંગ એક્ઝામ દેની આય અને યાર જ શિપિંગ કંપની में जॉब કરી હતી સાથે। તો જે એક્ઝામ દેના આયો? બીકોમ કમ્પ્લીટ થયો ને પોઈ અગ્યા છે એમકોમ? બીકોમ 6 એમજી એક્ઝામ દેની है લાસ્ટ યર जी। ઓકે, हाणे હું યાर जॉब કરી હતી। अच्छा, ओके, अग्या भणे जो आजो विचार है? हां, एमबीए करे जो है, बट एकरो वारे रही। एकरो रही, परफेक्ट। અને શિપિંગ કંપનીમાં યાર જોબ કર્યો હતો, રાઈટ? કેટલો ટાઈમ થયો? બસ હેરે જના હું મુજો બીકોમ જે એક્ઝામ ખતમ થઈ ને હું લાગી જઈયા, એટલે એકડો મહિનો થયો હે? હા, બરોબર। ओके, सो रिद्धि आज की क्वेश्चन हुए तो ही पूछो पहला, इफ यू हैव एनी सम क्वेश्चंस। बाकी आज इंटरव्यू तो थींदो एचआर पैनल जे साथे। मुखे है ना से आईपीएस बननो है। साईं जी मुखे साईं जी यूपीएससी जो जी ग्रुप जी गाल करे थे ना, तो मुखे उन जे बारे में चयो न जरा। यूपीएससी ग्रुप जो हूँ एकड़े लिंक केते जूम चैट ते हलाई ॾियां थो, अने बेसिकली उनमें असी जितला भी स्टूडेंट्स हैं ना के जो को प्रिपरेशन करिए था, राइट, उनके असी 3 बैचेस में डिवाइड किया है, राइट। फर्स्ट बैच के जो को अंडर ग्रेड है अने अना एनी स्टडीज चालू है, एंड दे आर एट अ स्कूल लेवल बेसिकली, प्राइमरी स्कूल लेवल, तो पान के स्कूल आईएएस तरीके पांच होता स्कूल आईएएस। वो सेकंड ग्रुप है कॉलेज आईएएस। कॉलेज आईएएस में छोकरा जो को ऑलरेडी लाइक एट योर एज राइट नाउ के बीकॉम कंप्लीट क्यों नो के बीई कंप्लीट क्यों नो, सो दीज आर लाइक कॉलेज आईएएस, एंड
थर्ड बैच इज एक्टिव सीरियस स्टूडेंट्स के जिन जी एग्जाम आने अच्छी प्रीलिम्स एग्जाम आने का है या मेंस आने का है, तो ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया है. तो आई थिंक यू बिलोंग टू द कॉलेज आईएएस. तो कॉलेज आईएएस के लिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि यू हैव टू स्टार्ट विद द एनसीईआरटी बुक्स रीडिंग्स, सैंपल सब्जेक्ट्स देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसका प्रिपरेशन करना है अभी. तो एनसीईआरटी बुक रीडिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू. वही ये करना है. और ये ग्रुप में देयर आर ऑल द पीपल, आई विल जस्ट शेयर इन द चैट बॉक्स. ग्रुप जी लिंक हला है यहाँ, so you can join that group. हाँ ठीक है. Yeah, and you can ask any question in that group, and we will share the NCERT books list. So you have to prepare for that. Do that preparation for 6 months or so, and then you will have some idea. Okay, I core level jo I understanding, and after that we can go for coaching. Coaching करें I hair शुरू ना करी जा. Hair I just try to learn about all the subjects, history, geography, बहुत सारा उसमें आता है, political science वगैरह. इसे सेल्फ स्टडीज के देखला करे है 12th जे बेस से एलआरडीसी एग्जाम हुई ना, यार से रनी हुई से थोड़ो घणो खबर पे थी पण वरी यूपीसी लेवल ते पर हार्ड कोला करे एलआरडीसी एग्जाम नहीं मुझे फर्स्ट टाइम જ हुई तो से पर हार्ड हुई कोला करे વધારે में बेस में को कायदो আছে कायदो बट है ना तो कायदो ने रीजनिंग तो हो ज नो साव ऐसा लगा डिफिकल्ट पे गयो. बराबर. Yeah, so it is a slow process. Okay, one by one आके करनो कपे. पहला ही बेसिक एनसीईआरटी जी बुक्स ही गेनी के नो, राइट, और उससे शुरू करो एक एक सब्जेक्ट वाइज. ओके ओके. So Satish bhai, we have one more room open. You can assign. Yeah, I have assigned to Riddhi ma'am, I have assigned you Abhishek. You can join in breakout room. ओके सर. ओके. Where you are there, I have assigned you at Chandni to join over there. Okay, so I think चांदनी के साथ में विवेक है, तो that is good. अभिषेक के साथ में रिद्धि है, अन्वेषा is good, स्नेहा is good, everybody is good. Yeah, ठीक है. So जय से बात हुआ मेरा, रिद्धि से भी बात हुआ, जानकी से बात नहीं हुआ है, दर्शन माओ एंड विवेक, है ना. So विवेक, दर्शन, Vivek has two accounts. Is that same guy or is that two different guys? कौन सा? विवेक मंगे. हाँ, विवेक ने दो डिवाइस से उसने किया है, पहले भी ऐसा लग रहा है. अभिषेक चांदनी. विवेक, आप अभी मेन सेशन में हो, आर यू फ्रॉम डिफरेंट डिवाइस? विवेक, कैन यू हियर मी? Yeah, I am on the main session. I'm using my phone. अच्छा, so there is I think another Vivek, right? Vivek Mange. That Vivek Mange is with Chandni. So that might be a two. Two Vivek. ठीक है. So Vivek, आप would you like to share your profile? What do you do and anything we can talk? And I'm working as a robotic software engineer in a company known as Drishti Works. I'm currently living in Mumbai, but my job locations is based on my project, which I shift from Goa or Mumbai. So I work on mobile robots where we transform robots into an completely autonomous robots. So currently we are developing, or we have already deployed certain robots in the beaches in Goa, where a completely autonomous robot is being deployed using guards for their security and like using few technologies like AI, machine learning. So I am currently working there as a software developer. Wonderful. So Vivek, आपका आवाज एकदम ब्रेक होके आ रहा था. So
let me just summarize. So you're working in a robotics company in Goa, and you guys have some good products out there, and you're actively working. इतना ही सुनाई दिया. आपका background क्या है? Like engineering, did you complete your engineering? Where and Yeah, yes, I have done my BTech from KJ Somaya College of Engineering in Electronics and Telecommunication. perfect. Wonderful. Uh, Great. So Vivek, good, really good, great work. I think robotics field, very few people are there, at least from our community. That's really good. So what's your main, what's the main thing that brings you here, like in Protsahan? So one thing for sure, you'll be talking to HR for the, mock interview. But is there something else you'd like to share here? My main goal was, since like everyone here is looking for to earn money and job, getting into a good job is a prime goal of everyone. And since I have completed around 1.5 or 2 years in the company, I was looking for a switch. So I wanted to, since and this is my I was looking how a student or how an employee can give a valid reason for a switch. Currently, as Abhishek said in the presentation, that your graph, what you do currently at your work, should be like a rising curve. But since it's been 2 years and my graph has started to make a plateau, so I just wanted to get into a reason or how exactly this switch can be done, and what do a person has to do to get this switch in a like a perfect curve. Correct. Yeah. So we'll make it general. We'll generalize it. This is not just for Vivek's question. For example, everybody, for that matter. So, jare paake lage, like, so let me just make it this way. So when we start our career, we are just starting, and then, we are growing. And panjo jo ko graph aise, mathe bene to, we are learning, we are growing. Panjo networking thiye to, lot of good things that we are doing. અને પોઈકોર થઈએ તો એ હોરિઝોન્ટલ થઈ બને અને પોઈકી નવો નતો થઈએ, it is going same thing, like, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है. शायद ऐसा भी हो सकता है या ऊपर भी जा सकता है, like that. But अगर फ्लैट चल रहा है for quite some time, basically, so there are multiple things one needs to do. So from my experience, what I can suggest is, number one, talk to your immediate project manager, your immediate boss, for example, and see that highlight it. So do a one-to-one interview with your boss, basically. One-to-one interview, matlab just to you guys, and say that we have completed so and so projects. I've learned these all things, and this is all good. Can I get an sense of understanding? What is our plan for next 1 year? Can I get an understanding that what is our plan for next 2 years, basically? What do you think my profile will be, in 1 year from this, basically, so that you can actually ask. And a question पर simple પૂછી શકું કોઈ કે બી અને સામેથી reply પાકે confident છે. And we also get to see from other people in our company कि हाँ कंपनी का कुछ प्लान है, आगे कुछ कर रहे हैं, there, let's say कुछ नया प्रोडक्ट लाइन बन रहा है and it is like less than a 6 months के इसमें आ रहा है या 1 साल के इसमें आ रहा है. If it is 2-3 year down the line, then it's a kind of a risk that we have to take, whether to continue till that point in time, or otherwise we decide that if it is 6 months or something, तो मेरा लर्निंग उसमें बढ़ेगा कि नहीं, तो डायरेक्टली मैनेजर से पूछने का. मैनेजर का अगर रिप्लाई पॉजिटिव आया, basically, that he is confident, right? If he's not, if he says, well, we'll see what the management team decides. So he is talking about the upper management team. Then you have to kind of see that there is no proper plan. So every company, they create a yearly goal, they have 2-year goal, they have 5-year goal. Unka goal bana hua rehta hai, and ultimate is you can find out from their vision statement and then mission statement that what they stand for. So we have to compare whether company is really growing that fast,
or are there, so mistakes can happen, company में mistake हो सकता है, but if they are going according to the plan, अगर उस हिसाब से हो रहा है, then you may feel like yeah I should continue. But अगर वो plan आपके immediately manager के पास नहीं है, and after few things here and there if you find out कि ऐसा नहीं हो रहा, then you can definitely start looking for different companies in the same field. uh, and see same field मैंने इसके लिए बोला कि sometimes क्या होता है, when you want to even switch the field, for example someone is working in hardcore robotics, electronics, something like that, and now मैं just एक अंदाजे से बोल रहा हूँ कि उसको completely marketing में जाना, for example, तो कैसे करेगा, right? So it should not happen that way. That switch can happen within the company. So let's say now you switch to another company, उसमें भी similar profile first of all होना चाहिए, then you spend 1 year in that and आपका environment में आप used to हो जाओ, then you can switch to different department. That is how your career switch should be. So that's the general thing. And whether to do it or not, yes, I will recommend, if you sense that there is no good plan prepared so far, then you can immediately switch, start looking, have a really good offer and come back to your team saying that see, this is what I get from the market, and once you get the offer, then you share, and even you give a second chance to your current team. Okay, after you bring in the offer, whether there is still some plan being there, if it is, then you can continue, if not, then you can switch. So but definitely ये जो same flat line है ना, it should not be for more than 1 year. Flat line 1 year जैसा नहीं होना चाहिए. It should be 6 months हो सकता है flat line, because कभी कंपनी के प्रोजेक्ट्स नहीं है, कभी some planning fail हो सकता है, that is possible. At least you have to give 1 year basically. 1 year of flat line से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. So that's what I would advise. So yeah, I hope it was useful. Clash, Anvisha here. Hey. Hi. So I had a conversation with Jill, but do I need to go back or do I stay So here? there are still few people, so we'll send one more person actually. All right. So I'll just go back to the room. Yeah, one more person will send. Okay, so Anvisha has joined. No, not joined. So हमारे breakout rooms नहीं रहते तो quickly कितने पूरे चालू है. Anvisha joined Vivek to you. हाँ, yeah, Vivek को. Vivek, you please join Anvisha, and then you can come back and we can have a conversation again. Okay, great. So that's done. I think Riddhi has some questions. Riddhi, just hold on. Abhishek के पास अभी कोई नहीं है. Anybody here in this call? जानकी जो थे वो सतीश भाई थे वो, right? अच्छा, दर्शन माव का नहीं हुआ है शायद. दर्शन माव, can you send him to Abhishek? ना मुझे થઈ ગયો है. Okay. ठीक है. So just पांच जने जितना भी 8 जना ही रूम में, किसका बाकी है HR round? Just unmute so that we can assign. One Abhishek is available. ठीक है. So meanwhile we have questions. So first Riddhi and then Jay. Riddhi, you have question? सर હું એ છે જે ચાહતો ને કે પાંજે સમાજ એક્ટિવિટી કરી હતી, ઓર્ગેનાઇઝ કરી હતી કોઈ પણ ઇવેન્ટ, તો અસા સુધી की પૂછતો કોઈ પણ ઇવેન્ટ આય એ રીતના नेरो असी तो गचमणे ट्राय કર્યું था કે लगभग 50 થી વધારે WhatsApp ग्रुप में बने था मैसेजेस, Facebook 20-25 ग्रुप्स थे बने था. भानुसमाज.org Facebook जो पांचो पेज है. So that is the best way you can get all the information. ಈ પ્રોત્સાહન ઇવેન્ટ થયે તો પણ 10-15 દી પહેલા વીડી પહેલા પોસ્ટેડ हो, जो एकड़ो Facebook लाइव पण पाके आवा. तो भानुसमाज.org ये वेबसाइट है पांजी, અને Facebook पेज facebook.com/भानुसमाज. This is the best way you can get all the details कि कोर इवेंट की थी. प्लस आई जो को भी पांजी एजुकेशन एक्टिविटी कैसी 2 सेल्स में डिवाइड किया है, 10 सेल्स.
करियर गाइडेंस जो सेल, ओवरसीज जो सेल, सिविल सर्विस जो सेल, प्रोत्साहन जो सेल, स्कॉलरशिप जो सेल, एडिटे 2 अलग अलग सेल है। खेल अने कल्चरल जो एक अलग सेल है, आईटी हेल्प डेस्क ऑटोमेशन जो अलग सेल है। तो हर एक सेल जब प्राइवेट अने पब्लिक ग्रुप्स है, तो इन जो ग्रुप में ही हुंदा तो ग्रुप में ऑटोमेटिकली मैसेज अचिंदो and you will get to know। रिद्धि मूंखे है ना स्पोर्ट में इंटरेस्ट आहे, तो मूंखे उनजी लिंक हलाई ॾिजो। Yes, definitely. I'm okay. Let's see how you can connect. I'll put my chat. I'll put my number. Don't share with anybody. We are just okay. Chat box se vado here. Just ping me here, and I will add to that page. Okay, Jay. Jay, you have. Yeah, I'm not able to hear you. जय का ये नहीं था। अच्छा, रिद्धि, you were saying something? सर मुझे एचआर इंटरव्यू થઈ હોય તો હું લીવ કરી શકાતી ને? Yes, yes. જે इंटरव्यू થઈ ગયો है, if you have received your feedback અને પાઈ जो को WhatsApp ग्रुप है इनते join रहो ने जो को भी रिजल्ट के फर्दर अनाउंसमेंट होगा सी होते पोस्ट करी तो। ओके, ठीक है। Yes. Thank you so much. Thank you सर, Thank you for joining. Jay, yes. जय, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, बीच में कट गया ऐसा लग रहा है। Try now. Hello. Yes. My branch in engineering is data science, and it's very difficult to get a data science job at bachelor level. So for that reason, I was preparing for GATE, and I want to actually go in research domain in AI/ML. But this domain is also very vast. Like I am not sure what research in AI. Like clarity ना है मोर। AI में किन domain में बनूं? तो उनला करे कि guidance कर रही थी। Yeah, so see, I'll tell you, Jay, what you're in second year, right? So अभी ना 2 साल बाकी है, and in 2 years you will not have very good understanding. Okay, I'll tell you. And no, it's not correct statement that immediately after your bachelor's you'll not be getting job in data analytics. Okay, तो डेटा में मिल सकता है। डेटा किस तरह से काम आता है, I'll tell you, right? Every company, they are working on some problem to solve and they need data. For example, there is an e-commerce company. I'm just giving an example. E-commerce company का क्या data रहेगा? Just tell me what are the data available for e-commerce company to look at. ऐसे मुझे बताओ. This is your interview question. E-commerce में भी to be specific, अगर कोई product specific e-commerce है, तो customer के preferences ही उसका data रहेगा. Like what customer likes to buy, what type of products the customer likes to buy, the demographics of the customer, age group, gender, location, and then what is the price range in which the customer mostly tends to buy things. These type of data is the main thing for e-commerce website. So this is the target audience that you talked about. ये एक type का data तुमने बताया. There are 15-20 different types of data available. There is order data, total number of order placed, total number of products that I have in the system, total number of what you call it, categories that I have, daily active visitors on our site, monthly active visitors, कौन से product का hit सबसे ज्यादा है, मेरा return rate क्या है e-commerce में, there are all of these items, right? Now do you think ये अगर डेटा मेरे पास एक डैशबोर्ड में ना हो, if I am an e-commerce company owner, then I will have a good understanding of what my company is doing? नहीं, right? I need to have all this, इसको बोलते हैं KPI, key performance indicators basically. तो ये सारा डेटा जो मुझे डे टू डे बेसिस चाहिए, मुझे मंथली डेटा चाहिए कि मंथली कितने कस्टमर ज्वाइन हुए, कितने कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, तो मेरा कन्वर्जन रेट क्या हुआ, ये सारा चीज डेटा है। और ये डेटा प्रिपेयर कैसे होता है? Either it can be done through a simple Excel spreadsheet or it can be done through the backend
इसका डैशबोर्ड बन सकता है, इसका टैबल्यू में तुम फिट कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस बेसिकली अवेलेबल. सो यू एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट from your bachelor's and data science or data analytics or whatever is that thing, you can definitely start helping a company from day one basically. So you will definitely get that job, कोई issue नहीं है उस केस में. And you have to do some courses, Tableau के कोर्स कर लो या एनालिटिक्स के कुछ कोर्स कर लो. रिपोर्ट बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का कोर्स कर लो, या तो फिर यू नो देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल. हर एक कंपनी को एक्चुअली ये सारा चीज चाहिए. वहां से तुम बिल्डअप करोगे और फिर जाके तुमको डेटाबेस लेवल पे मिलेगा कि भाई तुम अभी कुछ कस्टम स्कीमा बनाओ, कुछ क्वेरीज लिखो, फिर उसमें डेटा में कुछ यू नो तुम नया इनपुट डालो एंड देन यू डू दैट. ये टोटली पॉसिबल है. देयर आर रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया दीज डेज. हर एक स्टार्टअप जैसे जोमेटो से लेके कोई भी स्टार्टअप हो, उसको हर एक जगह पे हर एक टीम में डेटा के लोग हैं. सो इट्स एक्चुअली अ वेरी वाइड रियली गुड मार्केट. तो आप डेफिनेटली आप टारगेट करो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई मेरा AI/ML में करूंगा, मास्टर्स करने में कोई इशू नहीं है, करिए. लेकिन AI/ML इज अगेन अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट AI/ML, हम जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, दैट इज जस्ट लाइक 2% 3% ऑफ इट. आगे बहुत कुछ उसमें करना है. देयर इज ट्रेनिंग मॉडल्स रहते हैं, किस तरह से वहाँ पे पूरा एल्गोरिदम काम करता है, जो क्लाउड में सर्विसेज रहती हैं जो उसमें काम करती है, दैट यू हैव टू यूज. अभी जैसे कि सिंपल AI में भी फिर अलग अलग टाइप का ये आता है, राइट. समझो अब अगर हम कंप्यूटर विजन का बात करते हैं या फिर सम सॉर्ट ऑफ बॉट्स का बात करते हैं, जो आजकल बॉट्स चल रहे हैं, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स, जिसको बैकएंड में तो डेटा ही मिल रहा है. कि जैसे मैं सिरी को पूछ रहा हूँ व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे, तो उसने वॉइस टू टेक्स्ट कर दिया, टेम्परेचर टुडे को मेरे डेटाबेस में डाला, और टुडे मतलब मेरा प्रोफाइल, मेरा गूगल का प्रोफाइल जो मेरे फोन में लॉग इन किया है, तो मुझे पता चल जाएगा मैं इंडिया में हूँ, मुंबई में हूँ. तो व्हाट्स टेम्परेचर टुडे इन मुंबई, तो उसको हिट करना है वापस. किसको हिट करेगा? IBM वॉटसन जैसी सर्विसेज अवेलेबल है जो फ्री भी है, पेड सर्विस भी है. उसको किया तो वो रिप्लाई दे देता है कि टेम्परेचर इन मुंबई इज दिस मच, और वो आपको वापस दे रहा है. सो ये जो चीज है, मैंने एक एग्जांपल बताया, बट देयर आर लॉट ऑफ इन डेप्थ टेक्नोलॉजीज दैट आर अवेलेबल. और वो कौन सा एक फील्ड में करो वो तुमको अभी पता नहीं चलेगा. जब तुम मास्टर्स करोगे ना, तभी वो स्पेसिफिक पता चलेगा. सो आई थिंक यू हैव टू वेट टिल दैट. यू डोंट फाइनलाइज ऑन एनी वन फील्ड इनसाइड AI. હેલો કૈલાસ સર, શ્વેતા મેમ મારો રૂમ એમ્પ્ટી થઈ ગયો है. मुझे इंटरव्यू पति हो नहीं बेगो, तो मैम चुनो नेक्स्ट के हलाला. Right. So next, I think we have Jalpa, Nanda, and there is 1, 2, 3 person. Jalpa બેન, આ જો ઇન્ટરવ્યુ થઈ ગયો है? ના ના એ થયો. આમ एक्चुअली हेयर थोड़ी बार पहला ज्वाइन किया है. नो प्रॉब्लम. सतीश भाई, जलपा बेन को कौन सा बताया आपने? दर्शन? श्वेता मैम, श्वेता मैम, श्वेता बनशाली. या सतीश भाई, you're there? सतीश भाई, let me try. I think he has done ना, तो ज्यादा आएगा. सतीश भाई, are you there? Sorry. Already assigned. Already assigned to Jan. कर दिया ना? हाँ, चांदनी को असाइन किया आपने. ओके. हाँ, it was already assigned to her, so she has not joined. तो अभी join हो तो auto field में. अच्छा, तो श्वेता के पास अभी कोई नहीं है. So who is 1 2 3? 1 2 3 आप अपना नाम बताओ. 1 2 3. Okay, I think yeah. So बाकी जानकी आपका हो गया, राइट? जानकी, यू आल्सो वांटेड टू टॉक टू मी, ऐसा था. चांदनी ने कुछ बोला था. जानकी, you can unmute.
Janki said, excuse me, I have uploaded wrong file of resume. I want to upload another resume. That's fine, Janki. You can do that. Okay, so here common section. If your interview is done inside, I am just here standing by. If you have any question, you can ask. Otherwise, you can leave. Stay connected in the Protsahan group 2 or group 1, whichever group you are in. तो नेक्स्ट जो कोई इवेंट होगी जॉब फेयर रियल जॉब फेयर रहेगा उसके बारे में हम बताएंगे और इसका जो फीडबैक आएगा दैट आल्सो वी विल शेयर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask. Okay. Acha, someone messaged me. How I have a question. How does certification courses from NAC like research analyst put impact while looking for job as a fresher? Where in the resume we should show. So resume कड़ी ते बनाए जो already प्रोत्साहन 1 में Abhishek has already covered that answer, so I will not repeat. तो resume जी hair जी जो popular design है इनमें your work experience stays in the middle and left side का जो एक portion रहता है small putty type of section like 20% of your resume width occupied by that. होते ही यहाँ जी expertise लिखी सको. What are your skills and you can put your certification over there. So you can create a certification heading and under that you can put different certification that you have done. So resume जो format होनु खपे already Abhishek last वारे उनने share किए हैं. So if you go to that old Protsahan video which is there on YouTube, you can make your profile like that. And yes, having that course, research analyst course, will be definitely helpful for your job search. So I hope I have answered that. It was a really quick one. Okay, so that's done. All right, next, any other questions? So I quickly tell you, Anvesha has 1%, Abhishek has 1%, Chandni has 1%, Sneha and Shweta, they don't have anybody. So anybody wants to talk to Sneha or Shweta, they are available. Jay, have you talked to Sneha or Shweta? Aapka ho gaya interview? No. You want to talk to them? I think we had one round, so that is enough for me. Okay. Okay. All right. So either you ask question or you can probably exit. If you want me to talk about anything, I'm here for next 10 minutes more. So let's see. कोई सामने से बता नहीं रहा है. Janki, can you unmute yourself? Or yeah, Janki. Yes, sir. Sorry, I was just busy in. No problem. So you had some questions? No, I had no questions, but I was just I want to more. Some people are asking questions and you are giving answers. Then I would learn somewhat from that answer, so I had joined it. Right. And your background, you are preparing for IPS, isn't it? Yes, sir. Great. So, what kind of batch you are in? Like, are you done with your graduation? No, sir. I am pursuing MBA integrated right now. Okay. I completed my first year of it. First year. Okay. So I think this is your right time to start studying the NCERT books. Yes, sir. I have started it. Okay. So I think Darshan and
Darshan, Mao, and Jay. Darshan, what do you do? Darshan? Kailash, sorry to interrupt. Is there anybody who is going to join? No, I think Shweta, mostly all are done. Okay. We're So just I waiting just for had them to. a conversation with one person, Darshan, I guess. अच्छा, दर्शन के साथ आपका बात हो गया? Yeah. So Shweta, what we will do is either tonight or maybe tomorrow, whenever you guys are available, we'll do a quick review call, okay? Just to see, what was the overall feedback and so on. Okay, so as of now it's done, right? Yeah. As of now it's done. We'll not wait. Okay, so in case if you need any help, you can definitely connect. I am available Yes. for next 2 hours. So just let me know. Yeah. Okay. Thank you so much. Thanks. Bye. All right. So for anybody else, we are stopping the live streaming. If you have any question, you can join.